Welcome, guys. Welcome to another episode of Expiry Live Trading with ICICI Direct. As usual, we have Mr. Raj Deepak Singh with us, our derivative head. Mr. Dinesh Nagpal will be joining us soon by 12:15, 12:20. So for now, welcome Raj bhai. कैसे हो? ठीक हूँ गौरव, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे हियर. लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स. Yeah. बट अभी तो नहीं लग रहा कि कोई भी मूव आना होगा मार्केट में. जो आना था मेरे ख्याल से आ गया. नहीं, आज ऐसा हुआ है कि पहले तो राज भाई अपडेट ले लेते हैं. लास्ट टाइम हमने एचडीएफसी बैंक का डिस्कशन किया था, अगर आपको याद है. तो फ्राइडे को 1600 कॉल का बाइंग आया था रिकमेंडेशन आपके एंड से 20.5 और 21.5 पे. तो मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था. एंड टुडे वी हैव बुक्ड 50% इन दैट एट 26.5. तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, whoever is here, the HDFC Bank 1600 कॉल ऑप्शन हैज बीन बुक्ड. यूनाइटेड स्पिरिट्स, राजभाई, कल जिन्होंने yesterday it was given for 42 टारगेट, वो जिनको मिला, मतलब वो बहुत जल्दी भाग गया. मतलब 27 to 42 इट जस्ट वेंट इन 5 मिनट्स. तो जिनको बाय हुआ वो बाय हुआ, जिनको नहीं हुआ वो सॉरी. एंड देयर वाज पीएनबी 64 का कॉल ऑप्शन, एंड इट ऑल्सो वेंट इन 10 मिनट्स. वो डबल हो गया वहां से. सो इट्स बीन अ ग्रेट वीक. एक्सिस बैंक में आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, एंड 19550 पुट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. राइट राज भाई, ये दो कॉल्स राइट अपने. राइट. इन द मॉर्निंग वी वर हैविंग द व्यू यस. दैट मार्केट में कम डाउन, बट या. द वे इट हैज रिवर्टेड, so we went wrong. But rest of the recommendations, like you have discussed, they have यस. also given by our team only. या. तो मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं. nobody can be 100% right. uh, एब्सोल्युटली. yes. एब्सोल्युटली. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. राज भाई, तो आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं विद निफ्टी ओनली. विल स्टार्ट obviously only निफ्टी बिकॉज बैंक निफ्टी इज ऑन वेंसडे दीज डेज, सो विल नॉट टेक निफ्टी बैंक निफ्टी एनीमोर. सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी. तो क्या लग रहा है राज भाई आपको, निफ्टी का चार्ट डेटा क्या कह रहा है आपके हिसाब से? रुकिए, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट. सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शंस का देखें ना, पूरे दिन में क्या हुआ, तो स्क्रीन आ गई है. इज इट विजिबल? या. यस यस यस, इट इज. तो अभी तक जिस तरीके का खेल है वो ऐसा है कि लोगों ने कॉल और पुट में जमकर राइटिंग की है, जमकर. मतलब ये पहली एक्सपायरी है जिस दिन बैंक निफ्टी नहीं है, तो सब लोगों का फोकस पूरा का पूरा निफ्टी पे है. और निफ्टी के कॉल में अगर आप देखोगे तो 650 कॉल में ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर हो गए हैं. मतलब मुझे नहीं याद है कि इतने होते थे. नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑफ बैंक निफ्टी मूविंग आउट ऑफ मूविंग टू वेडनेसडे. तो 5 करोड़ शेयर 650 कॉल में, एंड ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयर एट 600 पुट. एम आई राइट और आई एम मेकिंग? नहीं, यू आर राइट एब्सोल्युटली. ये मॉर्निंग में जब मैंने देखा, मैं भी मतलब इवन आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई थिंक मॉर्निंग फर्स्ट आवर में देयर वाज 3 करोड़ 35 लाख शेयर्स इन 19600 कॉल ऑप्शन. मेरे लिए मतलब इवन दैट इज अ वेरी बिग नंबर. सो इट इज ऑब्वियसली द effects of bank nifty being shifted to Wednesday, and nifty being shifted to Thursday, and nifty is staying on Thursday basically. हाँ, अभी क्या है कि कॉल राइटर्स जो है, देखिए, 550 और 500 दोज आर मोर ऑफ ए ऑप्टिमिस्टिक लेवल्स फॉर मी. कि मार्केट में अचानक से इतना बड़ा सेलिंग आ जाए कि जो है हम लोग जो है 500 के आसपास पहुंच जाए. दैट रिमेन्स एन ऑप्टिमिस्टिक लेवल. फॉर मी द रेंज फॉर द डे इज 550 टू 650. Okay. मोस्ट प्रोबेबली समवेयर क्लोज टू 600. बेस्ट केस सिनेरियो समवेयर क्लोज टू 650. वर्स्ट केस सिनेरियो समवेयर क्लोज टू 550. Okay. Now, considering this call base, and we are near the highest level of the day, मतलब उतना भी नहीं गिरे, भी 615 जहां कल थे वही है. तो अगर मेरे को खेलना है तो मैं मतलब 15 20 25 पॉइंट के लिए किस तरीके से खेल सकता हूँ, दैट वुड बी द क्वेश्चन. Okay. तो मैं अगर 600 का पुट देख रहा हूँ तो 14 रुपए का है. राइट. मतलब ऑप्शंस में प्रीमियम भी नहीं है. इतनी ज्यादा राइटिंग है कि ऑप्शंस में प्रीमियम ही नहीं है. Absolutely. हाँ, और क्योंकि वो राइटिंग इतने सारे लोग आ गए हैं, तो वो प्रीमियम्स को तब तक नहीं बढ़ने देंगे जब तक उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने हो रहा है. Right. जस्ट एक सेकंड करो, आई हैव कॉल. हाँ, You can go on mute. हेलो. Ajay, you can go on mute. You're not on mute.
Yes, just a minute. Raj bhai has got an important call. He'll be back with us as usual. हाँ जी गौरव। Yeah. हाँ राज भाई, तो ये कंटिन्यूइंग विथ प्रीमियम गोल गाइस की वो प्रीमियम को तब तक बढ़ने नहीं देंगे जब तक उनका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ, बड़ा नुकसान नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पर कॉल बेस देख रहा हूँ जिसका मैं आपको बता रहा था, ऑप्शन प्राइसिंग का, हाँ। तो 600 का पुट है 15 रुपए का, 550 का पुट है 5 रुपए का। तो राइट। अगर मैं 15 रुपए का एक खरीद कर 550 के दो बेच दूं ना, तो मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। हम्म। तो मेरी नेट मेरे जेब से तो केवल 5 रुपए जा रहा है, ठीक है ना, और मैं राइट। 500 का कवर हूँ। राइट। करेक्ट। राज भाई, आपका तो स्क्रीन शेयर नहीं है, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ। ओ, अब बराबर, अब बराबर है, अब बराबर है। हाँ। हाँ तो मैंने तो कुछ, सो व्हाट आई हाँ। वाज टेलिंग कि अगर कोई बंदा, अगर इफ आई हैव टू डू समथिंग ऑन अ बेरिश साइड, हम्म। okay, 600 put is available at 15, 550 put is available at 5 rupees, या। right? या। So if I have to make what you can say, ratio spread, हम्म। put ratio spread, so my costing would be just 5 rupees, right? हम्म। तो राइट। हाँ, उसमें I can gain up to 50 rupees, and I will be my break even, lower break even would be somewhere close to 510 if I'm not wrong. हम्म। So that's the strategy I can do for the day. Apart from that, see, simple buying put में भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि 15 रुपए का खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्टॉप लॉस का। बट हम्म। 15 रुपए में जाने के लिए कुछ नहीं है। इफ समवन हम्म। विल आस्क मी कि हाँ भाई, क्या स्टॉप लॉस होगा, और मैंने उसको 1 रुपए का दे दिया, तो डजंट मेक सेंस। या। बेटर है कि हम लोग बेयर पुट कर ले, 15 रुपए का खरीद के 5 रुपए का एक बेच दें, हम्म। ना मार्जिन ज्यादा नहीं लगेगा। हम्म। 1:1 हम लोग बेयर पुट बनाते हैं तो 10 रुपए की कॉस्टिंग है, वी कैन होल्ड इट। या। सेकेंड, हम भी स्प्रेड कर लेते हैं कि 15 रुपए का खरीद के दो बेच देते हैं, हम्म। तो हमारी कॉस्टिंग और भी कम हो जाएगी। बट वन एज इज टू ऑफ टू। नाउ, हाँ, 1:2 पे। 7 रुपीज का आपका ये हो जाएगा, मतलब कॉस्टिंग बैठ जाएगा, हाँ, 7 रुपए अभी 5 रुपए के आसपास। मतलब अभी बात करते करते ये देखिए 15 का 18 हुआ है और वो 5 का हाँ। 6 हो गया। हाँ। हाँ, बहुत धीमे धीमे पैसा आएगा अगर मार्केट नीचे आता है, बट हाँ, लॉस कम होगा यहाँ पर। एब्सोल्युटली। बट राज भाई, मैं एक ही चीज मतलब मैं आज मार्केट देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि एक तो पहली बात, स्ट्रैडल में प्रीमियम रहा नहीं गया। अगर यस, अगर आप डेटा देखोगे तो 19600 का स्ट्रैडल से बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती फिलहाल की। बिल्कुल मानता हूँ। गिवन चालीस गिवन द रुपए भी मूव। नहीं, हाँ। 40 रुपए भी नहीं है भाई। एग्जैक्टली exactly. तो वो 40 रुपीज भी नहीं है, एंड यूजुअली 12 बजे तक ये प्रीमियम कम से कम 50 से 60 होता ही है, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 60। बट अगर आप आज देखोगे तो इट इज समवेयर अराउंड 38 39, मतलब और उसका 40। रीजन है ना कि जो नॉर्मली 1.5 करोड़ शेयर होते थे या 2 करोड़ शेयर होते थे, वो एब्सोल्युटली। आज आप 4 करोड़ देख रहे हो। एब्सोल्युटली। और आईवीज भी देखो आप, 6 का आईवी मैंने कभी नहीं देखा है, मतलब कॉल साइड, मतलब यूजुअली एट द मनी 9 का आईवी तो मैंने देखा है। अगर आप देखोगे एट द मनी भी आईवी इज अराउंड 6.5 6.6। मतलब ये आईवी तो मैंने नहीं देखा है बहुत टाइम में। नहीं, इसकी इसीलिए ना कि अब एक चीज और हो गई है कि मार्केट में पहले राइटर्स फिर भी सोच रहे थे कि वो पैसा बना लेंगे, बट अब जो है मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि राइटर्स भी पैसा बनाएंगे, हम्म। क्योंकि राइटिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है पैसा नहीं है। कमाने के लिए। राइट। मतलब नोबडी हैज सीन, एज यू हैव सेड कि 6 की आईबीएस पे 19600 का पुट चल रहा है, एटीएम है, आज सेटलमेंट है, ठीक है, सब कुछ है, बट इतनी लो आईबी पे नहीं यार। देयर इज नो पॉइंट। ऑप्शन, मतलब वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग और स्प्रेड्स, वी कैन एब्सोल्युटली। नॉट गो फॉर सेलिंग फॉर ऑप्शंस। यस। या। सेलिंग ऑप्शन इज अ सुसाइड, मतलब अगर जो हिसाब से आई, जो हिसाब से प्रीमियम है, इट इज अ सुसाइड बिकॉज वन मूव विल टेक अवे एवरीथिंग, मतलब इट कैन टेक अवे मंथ्स और इवन यस, एक यस। महीने का या काफी 3 4 महीने का ही प्रॉफिट लेके जा सकता है आपका। सो व्यूअर्स हु आर कंफ्यूज, विल जस्ट टेल यू गाइस वन थिंग, दैट राइट नाउ गिवन द सिचुएशन, the trade is only on buying in options, not selling in options. Given the setup of market, 19600
Given the setup and given the data, 19600 straddle is the best strategy. But given the low premiums, because the premiums are only at for 40 rupees, 40, 38, anywhere between 38 to 40, the risk to reward ratio is not favorable. So Rajbhai is avoiding 19600 ka straddle. Anybody who wants to play this expiry is of the opinion of buying puts, of buying 19600 put, which was at somewhere around 15. Now it is back at 15, and selling 19550 put, which is at 5. Total costing is 10 rupees. But Rajbhai, are you, is this ye jo strategy hai, should be executed by everybody or ones who compulsory wants to trade the expiry? Because See, if given, yes, yes. yeah, The way, if I, you will ask me, sir, what is the trade? yeah, Right. The answer to that question is that I'm not going to buy, sorry, sell options straddle today. yeah, So because the premiums are too low. yeah, Now what can we do? Because we are at the higher, I said that कि हमारा जो range है for the day is from 550 to 650. Because we are closer to on the higher side, so it would be better if we can buy put and sell OTM put. right, 50 पॉइंट की रेंज में अगर हम लोग अभी तो 15 से भी कम है हमारा, अगर 15 और 5-10 रुपए की हमारी सिंपल पुट स्प्रेड मिल रहा है हमको। yes, हाँ, और yes, अगर मुझे इसको रेशियो बना दूंगा तो मेरी तो जेब से वो भी नहीं जाएगा। exactly. यस, सी So, आई थिंक Rajbhai, we have yeah, already given it in our one click derivatives. okay, See, here it is, put spread. So we had given at when the option premium was around 28. Okay. So from 28 it has declined to 15. So 13 rupees loss. But that 13 rupees had been taken care by your 550 decline in 550 put options. So those option absolutely, prices have come down by 7 rupees each. So net we are not in a loss. right. Yes. सर राजभाई एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या 19600 का पुट नेकेड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मैं प्रॉब्लम यही है ना कि आप 15 रुपए में, इफ यू आस्क मी फॉर द स्टॉप लॉस, आई डोंट हैव अ स्टॉप लॉस। राइट, और राइट, इसको मैं हीरो जीरो भी नहीं बोलना चाहता बिकॉज इट्स नॉट 230। या दैट्स राइट। तो तो तेरह राजभाई रुपए एक, सात पैसे का चल रहा है अभी। हाँ तो एक काम करते हैं, लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम, मतलब लेट द पिक्चर गेट क्लियर बिकॉज इट इज जस्ट 12:15, 1 यस, 1:30 तक वी मे हैव अ बेटर क्लियर पिक्चर, देन वी कैन सी व्हाट टू डू. Right now, if anybody compulsory wants to trade, can do a put spread of 19600, buy one lot and sell one lot of 19550. Total costing 10 rupees. That one can do if he wants to compulsorily trade. Or else we can just give it some time. 1 बजे तक देखते हैं क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं. क्या ये भी ठीक रहेगा राज भाई स्ट्रेटेजी के हिसाब यस, से? यस। हाँ, देखते हैं ना किस तरीके से मार्केट का Absolutely. वो आता है। Absolutely. Milind sir, the stop loss for 1000 call option has been triggered. It is already updated on the website. So Axis Bank and today's 19550 put, two options have been triggered. So you can exit Axis Bank 1000 call option. ओके, तो राज भाई कुछ स्टॉक्स या कुछ आपके नजर पे हो, आई थिंक वी कैन, इट्स बेटर टू डिस्कस दैट बिकॉज राइट नाउ इंडेक्स इज नॉट गिविंग एनी कंफर्ट टू राइट। ट्रेड बेसिकली. यस। या, See, this is something which I was looking at quite Adani Enterprise. या, Uh, Clearly, short covering is happening. The problem, what happened that on the settlement day, there was a news in the entire Adani Group's या stocks. सेबी वाला. Yes, सेबी या, वाला, सेबी वाला नहीं, ORCPP वाला, हाँ राइट, जॉर्ज सोरोस वाला. जॉर्ज सोरोस वाला। या, तो उसकी वजह से स्टॉक गिरे, लोगों ने मतलब ज्यादा मूव नहीं आया। हम्म, बट अगर आप पिछले 3-4 दिनों में अदानी इंटरप्राइज का मूव देखोगे तो हम्म, ये करीब 2420 के आसपास था, 2420 से ये 2500 हो गया। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 1st of September. हम्म, Same thing is happened with the futures also. Your future prices have also moved up हम्म, from from 2430 odd levels say 2520. हम्म, Rightly. या, Now if I'm looking at this call of 2500, it has declined. या, So it was somewhere close to 140. Now it is at 134. And if I look at the options data, एक बहुत बड़ी दीवार है यहाँ पर। करीब 12 लाख शेयर जो है अदानी इंटरप्राइज के 2500 कॉल में है। एक बार यहाँ पर क्लोजर स्टार्ट होता है ना, दिस हम्म, ऑप्शन कैन इजीली बी डबल। ओके. So basically
ऑन रडार आपके लिए अडानी एंटरप्राइज है। यस। Right, but can you just tell me the strike? I'll just update it on the chat for 2500। 2500। 2500. Okay, यस। because today, interestingly, since Nifty may there is very low premium and everything, so the trade is not on Nifty, trade is on Adani Enterprise. Adani Enterprises So it is more of by, a positional trade, not yeah, for the intraday. okay. At what rupees, Raj bhai? कौन से प्रीमियम पे लेना है? मेरे ख्याल से अगर 140 के ऊपर जाना चालू करे तो लेना चाहिए इसे। Okay, buy above 140, right? यस। Okay, and stop loss would be 97, 98। 97 and target double, right? यस। So I'll write target 250 to 280. और अगर छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना है तो फॉर द टारगेट ऑफ समवेयर क्लोज टू 170, 180, वन कैन हैव ए स्टॉप लॉस अराउंड 1010, सॉरी 110। Okay, 1110 stop loss and target 170 plus. Okay. Sugandha Gupta, can you explain if there is any discrepancy between spot price and future price? Why is that? तो Sugandha मैम क्या होता है ना, future price is something, future is anticipation. Okay, so suppose you're expecting, and future are 3 months, like three contracts. So basically, the current month, the next month, and the far month. So suppose we are in September, so September month future होगा, you'll have an October month future, and you'll have a November month future. Okay, future price is basically is, suppose you are expecting some good news or you're expecting an anticipation कि आगे जाके stock move होगा, तो you will always have that future price is in premium. So current, suppose your spot price is at 100 rupees, future price can be at 110, 115. Okay. And on the expiry day of that current contract, the future price and the spot price has to become equal. So what happens, even if your future is at 110 right now and the contract is closing, it will come down, it will match your spot price. Okay. Suppose there is a bad news expected during the COVID, when we saw there is a there is a discount in the future price because आप expect कर रहे हो कि आगे जाके market और गिर सकता है. So future price works on the anticipation of what can be there in the future, whether it's a good news or bad news. On good news, on normal day, it is in premium, the future price is more than the spot price. And if there is bad news on some negativity around the market, your future price will be in discount, that is lesser than the spot price. And on the expiry day, future price and spot price have to become equal. दोनों equal ही close होते हैं. Raj bhai, you can add your comments here. मैडम, जस्ट एक छोटी सी चीज, जब जैसे आप अपना पैसा बैंक में भी रखती हैं तो यू एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। सो इन डेरिवेटिव्स और वेरेवर इन अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल मार्केट एक टर्म होता है कॉस्ट ऑफ कैरी। मतलब आपकी जो पोजीशंस है उसको आप 1 महीने 2 महीने जितने दिन के लिए रख रही हैं उसका आपको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा तो क्या फायदा आपको वो पोजीशन लेने का। आप यहाँ पर पैसा ही क्यों डालेंगे, आप अपना एफडी भी करेंगी जहाँ पे आपको 4% एटलीस्ट रिटर्न मिले। तो इस वजह से फ्यूचर्स प्राइस हमेशा प्रीमियम में रहते हैं क्योंकि स्पॉट एट द डे ऑफ ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट योर फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइसेस आर दे आर सपोज टू बी इक्वल as Gaurav just said. But because you expect your returns, let's suppose you are expecting a 10% return in a month, so your future prices will be at 10% higher over spot. If you are expecting 0.65 percent return, then your future prices would be somewhere close to 100-120 points in premium. बट जो एक मिनिमम होना चाहिए कि जैसे आपका जो भी आपका 7 to 8% मार्केट में रिटर्न है उतना रिटर्न आपको फ्यूचर्स का प्रीमियम दिखाना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर मार्केट आता है कि मार्केट अगर बेरिश है तो वो प्रीमियम कम हो जाएगा, मार्केट कुछ ओवरली बुलिश है तो वो प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। तो फ्यूचर्स का प्रीमियम इज आल्सो ए गुड इंडिकेटर वेयर द मार्केट इज। As of now, with just 55 points premium, market is a bit bearish. A bit bearish. I'm not saying overly bearish, a bit bearish. Even it's more of a neutral, I would say, not even bearish. क्योंकि अब आपके पास सेटलमेंट के लिए तो केवल 2 ही हफ्ते बचे हैं। तो उन 2 हफ्तों में आपको जो आपने जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 19 या 30 बिप्स। तो 30 बिप्स इज गुड इनफ फॉर your next 2 weeks or 3 weeks. Absolutely.
तो एक वो चीज है जो हमारा प्रीमियम डिसाइड करता है कि हाँ कितना होना चाहिए। अगर यही चीज आपका डिस्काउंट होता तो पेसिमिज्म आ रही है ओवरली। जैसे आपने सीरीज की शुरुआत में देखा था करीब 150 पॉइंट्स का प्रीमियम था, वो थोड़ा ज्यादा था। तो अब बहुत ज्यादा प्रीमियम अगर मार्केट में होता है, दैट इज नॉट ए गुड साइन, दैट सजेस्ट ईदर कंसोलिडेशन और सम वीकनेस। अगर यही चीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ओवरली पेसिमिज्म में ही हम बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की। ओवरली ऑप्टिमिज्म में भी हम बात करते हैं, कुछ ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं जिसको हम ओवरबॉट सिचुएशंस बोलते हैं, वो एक कंडीशंस आती हैं, उसके हिसाब से वी टेक द कॉल। Absolutely. Blue Point Decor, see, it's a English session, so either it will be a mix of both Hindi and English. So please do not expect any thing. We can speak in one language only because we have Hindi speaking viewers and English speaking viewers as well. So please, I hope you understand that. Peachy Flowers, what is the accuracy of calls of ICICI Direct and what is the rest to reward ratio as I open? Moreover, don't you guys? Okay, Peachy Flowers, we have a audit going on all our calls. So whenever there's a report released, we do put out our accuracy of what is the accuracy of ICICI Direct's call, and we work on all the strategies depending on the market condition. We give out the call, so it cannot be a very static strategy. It is based on the market and the market movements. Okay, so today I'll take some questions. PCR data. Raj bhai, there are a few questions because right now Nifty trade nahi hai. So the only trade right now, guys, is 2500 call option of Adani Enterprise to buy above 140. The trigger is above 140. Please keep that in mind. Stop loss is 110 and target is 170 plus. Okay, and for people who want to hold it for long, the stop loss is 97 there and target is somewhere around 250 to 280. So that is the call given by Raj Deepak Singh, our derivative head. Okay. So my team has given this long put bank nifty somewhere around 1136. This was given 44,600 put buy in bank nifty for the target. So we had given somewhere close to 250 already at 290. तो इसको भी एक बार Yes. देखा जा सकता है। पुट रेशियो निफ्टी के बारे में मैंने बात की कि आप जो है 19600 का पुट खरीद कर 19550 के दो पुट आप बेच सकते हैं। देखिए Hmm. जब हमने दिया था तो हमारी कॉस्ट थी 12 दूनी 24 ₹5। अभी भी वो कॉस्ट ₹5 ही है। तो इन केस मार्केट सेटल्स एनीवेयर बिलो 590 और 595 वी विल बी इन द मनी। Yeah. Now you'll be in profit basically. यस। So today the market is very, very dicey. The premiums are very low. VIX is low. There is a range, and today is the first day when Nifty is going alone in the expiry. There's no bank Nifty, so number of contracts have also been increased. So it's sort of very dicey day. So we do not want to take any aggressive call. So please understand. Intraday, Sunish, we have intraday call that can. There is a WhatsApp service that we have. I'll ask my product team to help you out with that because they look out for this. So just give me a moment. I'll ask someone to join the chat. Okay, you can subscribe to that. Dinesh sir, are you there? Yeah, okay, he's connecting. Dinesh sir is here. Let us check. Let us take his chart check. What does his chart say? Should I hold? Yes, Engineers India Limited you can hold because that's the call given by us. We have given the time frame as well, Apurva, so you can hold that. Okay, there are two calls, NMDC and Engineers India Limited. Yesterday only we have released it, and you can hold that. There's no problem holding that. It is from our PSU thematic Gladiator PSU thematic call, so you can definitely hold that. Dinesh sir, are you there? Am I audible to you? Yeah, you are audible, Gaurav. Yeah. Good So Dinesh afternoon. sir, we were just talking about Nifty, me and Rajbhai, that premiums are too low. There's no point selling the straddle and selling calls because IVs are at 6, lowest IV I've ever seen. Plus, market seems very directionless. So buying option makes sense rather than selling option because though it is directionless, the premiums are low, so it doesn't make sense for 40 buck premium to sell option to sell a straddle basically, and that too at 12:30. So what does the chart say? What does the chart say from your end on Nifty? Yeah. So my reading is that 650 looks like a huge wall for today. It's if it starts sustaining above 650 for 15 minutes also,
it will see a mad scampering of CE short covering today itself. On the other hand, two visits yesterday one, today one near 19,550 saw fantastic support and bounce coming in the Nifty. First, yesterday it came from IT and banking. Yesterday banking, today Reliance was also trying to do that a lot. And today also banking went up and came down. No, one must remember today is the first independent expiry of Nifty. Because all these years we've had Bank Nifty playing a major part in it. Yesterday Bank Nifty went its own way. So आज आज से जो उसका इम्पैक्ट है ना वो थोड़ा अलग होने वाला है Yeah. क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन होगा एक दूसरा क्या है कि आज आप वॉल्यूम देखो 19600 सी का भयानक वॉल्यूम है मतलब जो जो एक्सपायरी ट्रेडर होते हैं और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उन्होंने बाकी सब इंडेक्स को आज छोड़ दिया। छोड़ के पूरा का पूरा ध्यान आज इधर मार दिया है तो ये एक अनयूजुअल वॉल्यूम फर्स्ट टाइम है सो आज के लिए इट्स समथिंग लाइक दैट कि हम टेस्ट कर रहे हैं एक एक डिफरेंट जो एनवायरमेंट में घुस रहे हैं आज पूरा एकदम निफ्टी को लेके तो आज ज्यादा हेरोइक्स नहीं करने का आज वाले दिन Absolutely. Yeah. Sir, can you just share the chart? मतलब आपको क्या लग रहा है? What yeah is one the second charts? I'll do it. Yeah. So Rajbhai has given one trade that is Adani Enterprise 2500 call option. Just one second. I'll share my screen. Just one second. You can see my screen? Right, Yeah. Gaurav? Yeah. So we have Nifty here. देखो एकदम क्लाउड के ऊपर है नो फॉर्म पहले निफ्टी कर लेता हूँ एक बार फॉर्म अ क्लाउड के ऊपर है और बुलिश टीके क्रॉसओवर का पॉसिबिलिटी होने वाला है डेली में उसमें एक दो दिन लगता है सो देर आर सिग्नल्स तो बना रहा है बट अभी तक फुल रेडी नहीं हुआ है तो जब रेडी होगा तब एग्रेसिव होने का है और अगर फेल होगा तब वी व्हाई शुड वी प्रिज्यूम फेल होगा ये वी टेक इट एज इट कम्स आउट ऑफ द फुल पिक्चर ये 19600 सी है नॉट डूइंग कुछ नहीं कर रहा है इसमें या विच अदानी यू वर सेइंग ना Yes, that's a recommendation from Rajbhai. Buy 2500 call option of Adani Enterprises. His target is he's expecting a doubler here in premium from above 140. Conditional buy. It should cross 140. Only above 140. And he is expecting this to go to 280 for positional players and for short termers who want to do swing trading and all. His target is 140 here. Oh, sorry, his target is 170 here. Yeah, you can see out here 140 तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है Yeah. और 140 के ऊपर there is nothing till 170 and then मजा ही मजा है उसमें Absolutely. So this is what Rajbhai is expecting. He's expecting a move above 140 for 170 small, and then from there he's expecting it to move till 250 to 280 levels. Let it go above this. You have a super move coming out of it then. Yeah. Yeah. Rajbhai and Dinesh sir, I just since index is muted and index is thoda index is muted and index is a bit it's the first expiry for Nifty. I just wanted to get your attention on a stock which looks a stock as in an index which is in current today is the Nifty Realty Index. Which one? And Nifty Realty Index, the real estate index. Yeah. Okay. तो राजभाई DLF में आपको कुछ दिख रहा है डेटा वाइज वील जस्ट टेक दी चार्ट चेक फ्रॉम दिनेश सर सून बट एनीथिंग फ्रॉम योर एंड ऑन DLF गौरव ये जो प्रीवियस डिक्लाइन आई थी ना जो 500 से 460 465 आया था या तो इसमें एक्सपोनेंशियली शॉर्ट्स आए थे सर यू कैन टेक DLF डायरेक्टली दिनेश सर यू कैन टेक DLF या यू कैन टेक DLF अभी तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है और मैं ये बोलूंगा कि इसमें लॉन्ग्स नहीं बने हैं अभी तक सो जब तक आपके लॉन्ग्स नहीं आ रहे हैं तब तो मतलब क्या होता है ना कि मार्केट का पार्टिसिपेशन जब बहुत अचानक से तेजी से बढ़ने लगता है तो यू विल बी लाइक ओके व्हाट टू डू अभी वो चीज नहीं है स्टॉक इज स्टिल लाइट सो टिल इट इज होल्डिंग अबव 500 505 सॉर्ट ऑफ लेवल आई बिलीव स्टॉक इज कैन डू मच बेटर देन नाउ पहला जो इसका हर्डल होगा वो मतलब आपका जो लाइफ आई था ना ठीक है 520 का
जो इसने मेरे ख्याल से 2009 में मारा है। आज 527 हो गया है राजभाई। यस, अभी 527 है, तो मतलब मेरे हिसाब से अगर इन लेवल्स के ऊपर भी रहता है ना, थोड़ा तो ये कंसोलिडेशन कर सकता है। बट मेरे लिए 490 से 505 इज अ सपोर्ट जोन, जब तक इसके ऊपर है आई विल कीप ऑन बाइंग द स्टॉक। ओके ओके, दिनेश सर, इज दैट व्हाट योर व्यू मैचेस विद Yeah, राजभाई? yeah. DLF is trying to push its way up. एकदम क्लीन नीट कैंडल्स बन रहा है उसमें. एंड इफ Yeah. यू वांट टू एक्चुअली कंपेयर DLF, स्टार्ट लुकिंग एट द अदर रियलिटी हैवी वेट्स लाइक ओबेरॉय एंड गोदरेज ऑल्सो. तो Yeah. क्लैरिटी मिल जाता है इसमें. ऑफ कोर्स दे ऑल थ्री डोंट वर्क टुगेदर, कुछ पहले कुछ बाद में चलते. सो इफ यू लुक एट गोदरेज, यस, इसमें अभी तक वो मूवमेंट नहीं आई है गोदरेज में. जो DLF इज ऑलरेडी शोइंग, गोदरेज विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू पुश इट्स वे अप. सो बड़ा रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है अभी इसमें, काफी. Hmm. ट्राइंग टू पुश इट्स वे अप. फ्लैटिश बाउंस बैक है, पुल बैक होके अगेन अटेम्प्टिंग अप मूव है Right. गोदरेज की. सो थर्ड वन ओबेरॉय. Yeah, see, this is as strong as if you go to see DLF. So you get a clear picture ki, it's not an isolated move. Hmm. The index is doing well like that projection. Yes. Of course, you can't compare to the smaller and mid real estate stocks. They have outperformed the large ones. DLF, Oberoi और गोदरेज उनके सामने माना लग रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है इन्होंने, ऐसा लग रहा Right. है उनके सामने. Right. So that was because for a good 1 month, large caps were muted. We saw we saw a grinding decline in Nifty and several sectors. Large cap stocks में movement नहीं थे. तो which in my view, is turning now. The large caps are slowly coming back into form, slowly. So अगर मैं इसको एक बार ऐसे करूं और लाइन चार्ट करता हूं, तो you get my idea what I'm trying to say. कि this full, you know, projected particularly for large cap point of view, ये The wedge ऐसा breakout is here. ऐसा फॉल आया है, ऐसा. Ah. ओके, तो पहला तो वी शुड नॉट लुक ड्रीम अबाउट अ वी शेप रिकवरी लाइक दिस. ओके, Yeah. ऐसा मत सोचो. जैसा जैसा जस्ट वन, जैसा फॉल आया वैसा ही आप मूव सोचो उसमें. Absolutely. Absolutely. हम्म. राजभाई, आपका कुछ 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 recommendation from your end on DLF or any realty stock? नहीं यार, वो तो मतलब हम लोगों ने खेला भी है, किया भी है, बट एट CMT Right now at this moment. Okay. या डेरिवेटिव्स में क्या रहता है कि आपके छोटे से भी मूव जो है ना, Hmm. दैट विल डिस्ट्रॉय. सो आपके स्टॉप लॉसेस एंड एवरीथिंग यू नीड टू कंसीडर व्हेन यू आर टॉकिंग इन डेरिवेटिव्स. Yeah. सो एज ऑफ नाउ जो हमारे हैं, हम उसी में रहते हैं. Yeah. तो या Yeah, यही ठीक जो है. है. There's a question. There's a question on a concept. Sanchit Jain is asking, sir, sometimes spot moves up, but P side premium increases in option. Why so? Sanchit, for any move in CE or PE, मतलब inside the call option or put option, never look at the spot price. You should always look at the future price, because options is nothing but options derives its value from the future price of that instrument. So option is a derivative of future, not the spot. So always look at the spot price. Your question will be answered automatically, why there is a discrepancy here. Okay. Apollo Hospital can hold it or drop. Rajbhai, will you take this up? Apollo Hospital. गौरव, अभी तो होल्ड कर रहे हैं, अभी तो 4800 है स्टॉप लॉस. Okay. ठीक है, स्टॉक में थोड़ा सा लिक्विडेशन आया है, but till these 4800 levels are held, I think things are fine. It may take some more time, but eventually it should move higher. My Okay. stop loss will be somewhere close to 48 in Apollo Hospital. Okay. Okay. अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग जो है, हम लोगों ने ये केमिकल स्टॉक को पकड़ा था. Right. नाउ आई एम जस्ट रिकॉलिंग,
ऑल द केमिकल्स, मतलब वेदर इट्स SRF और मतलब जो सबसे कम चला है वो आपका यूपीएल है, बट इवन दैट हैज मूव्ड अप। Yeah. हाँ, तो एक केमिकल स्पेस है जहां पर एक कवरिंग का एक्सपेक्टेशन था हम लोगों को, तो दैट हैज बीन पैनिंग आउट। तो देखते हैं, मतलब अगर मुझे कुछ और बाई करना है, जैसे आरती है आपका 470 या 480 का था, आज की डेट में 525 के आसपास है। तो केमिकल एज सेक्टर उसमें थोड़ा सा आ रहा है, प्रोमिनेंस आ रहा है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, थोड़ी कवरिंग स्टार्ट हुई है। और अगर Okay. ये अभी तो कवरिंग हुई नहीं है, आई वुड से ओनली 10 to 15% shares have been closed, Yeah. so still there is a lot of room in chemical stocks. Okay. So there are 3-4 questions, very interesting ones. तो मैं धीरे धीरे करके ये सब एक एक करके लेता हूँ, ठीक है? First is, sir, please give your view on banking stock for this month. Raj bhai, I'll take this from you because rollover analysis जो आपने रिलीज किया है, आपने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि बैंकिंग स्टॉक्स में सी शॉर्ट कवरिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सीइंग शॉर्ट कवरिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स. सो वी विल टेक दिस फ्रॉम यू ओनली कि आपको बैंकिंग स्टॉक कौन सा अच्छा लग रहा है इस महीने के लिए, एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन द ओवरऑल बैंक निफ्टी. बैंकिंग में सबसे पहले वी नीड टू चेक HDFC बैंक, राइट? एब्सोल्युटली. Because that holds your almost 28% weight in Bank Nifty. We cannot discuss ICICI Bank because of the compliance reason. But top three private sector bank, SDFC Bank, ICICI Bank, and Kotak Bank, all three put together holds almost 60% weight in Bank Nifty. So when it comes to SDFC Bank, let me tell you that the OI at the beginning of the series was at life high, and that's why even we have clearly mentioned that we are not bearish in the stock, and SDFC Bank itself can help a lot to the up move in Bank Nifty. तो पिछले 3 हफ्तों से आप अगर ध्यान दोगे तो बैंक निफ्टी हैज बीन आउट परफॉर्मिंग, ठीक है कम चल रहा है कुछ भी है, बट बैंक निफ्टी हैज बीन आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। एंड उसका भी सबसे बड़ा रीजन शायद एचडीएफसी बैंक है कि इसकी जो एक्सटेंडेड वीकनेस थी, पहले जो इसने लो मारे थे उन्हीं, मतलब आई थिंक दिस योर समवेयर ऑन 25th ऑफ अगस्त, या. उसके बाद से धीमे धीमे ये ऊपर आ गया। बाकी आपके जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वेदर इट्स एक्सिस बैंक, वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट कि या. हजार ऑलवेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जब तक उसके ऊपर नहीं आ रहा बड़ी चीजें नहीं मिल रही हैं। कोटक बैंक में भी कॉल बेस बहुत ज्यादा है। तो एक अगर मुझे कवरिंग के लिए कहीं पर देखना है तो अब मेरा सिंपल वन, मतलब एक मछली की आंख की तरह, आई हैव टू लुक एट एचडीएफसी बैंक। ओके. ये अगर 1600 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो एचडीएफसी बैंक कैन मूव टू अनदर 4 to 5%, और वो 4 to 5% आपका बैंक निफ्टी में जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो आपके 500 से 600 पॉइंट के आसपास होगा। एब्सोल्युटली. So basically, anybody was asking for the banking stocks. So the stock that can be on your radar is the HDFC Bank. We already had a call with jiska 50% booking has been done. But if you still want to see, you can see the look at our open recommendation, which is 1600 call option, which was given at 20.5. So one can look at that. Even we had given covered call in Canara Bank a couple of days back. 325-26 पे दिया था, currently somewhere around yeah 335। तो Yeah. यहाँ पर हम लोगों ने we had given 3 days back, so Okay. the target was 345, booked partially, still open with the same trail stop loss at 325। Okay. Okay, now I'll take the next question. Next question is, sir, view on power grid. So Dinesh sir, power stocks and Rajbhai, I think Rajbhai and Dinesh sir both can come in. So power grid, क्या लग रहा है? What does the chart say, sir? See, PSU stocks have been the darling, and Power Grid was an unbelievable mover for week after week. फिर थोड़ा सा stagnate हुआ है. I can see a sideways correction which took place, Hmm. and now again attempting to go up. Clarity still missing in the move to me. Clarity is still Okay. missing in this one. The movement, the shuffle between PSU has taken place. What was first BEL and Power Grid, NTPC, RECL, PEF has in the last 15 days shifted towards BHEL, Coal India, last 2-3 days. तो थोड़ा सा shuffle हो रहा है, within PSU index stock shuffling चल रही है. इसमें clarity missing है for an up move right now. Okay. Rajbhai? देखो, पावर ग्रिड एक ऐसा स्टॉक है ना, जो सारे पीएसयूज को आप एक तरफ रख दो, पावर ग्रिड को एक तरफ रख दो, इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी।
वन ऑफ द लीस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स। जब मार्केट में बड़ी वीकनेस आती है तो भी आप इसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन मैंने तो नहीं देखा। तो इट्स अ परफेक्ट कैंडिडेट ऑफ ए कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। बाई करिए, ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करिए और इसको रोल करिए, फिर कॉल ऑप्शन सेल करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव तो नहीं देता बट ये स्टेडी मूव देता है। राइट। सो हाँ, तो मतलब पहले ये धीमे धीमे अपना बेस ऊपर कर रहा है। आई वुड थिंक लाइक दैट कि हाँ, पहले जब ये 180 के पास बेस बनाया, फिर 200 के पास बेस बनाया, अब ये शायद 225 से 240 के बीच में बेस बनाए। वर्स्ट केस सिनेरियो से आई एम टॉकिंग अबाउट कि 240 आ जाए तो ये तो मतलब ब्लाइंड बाई है फॉर मी। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे भी खरीदना है तो स्टॉप लॉस एट 240 और अब अ बिट बिलो दैट दोस लेवल्स एंड सेल ओटीएम कॉल्स। अब 260 270 का कॉल बेचिए, अगले महीने फिर कैरी फॉरवर्ड करिए। इट्स मोर ऑफ एन डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट थ्रू पावर ग्रिड, क्योंकि वोलेटिलिटी कम है। आप बाकी कुछ भी कोई भी पीएसयू स्टॉक उठा के देखिए, इससे कम वोलेटिलिटी और स्टेडी मूव कहीं पर नहीं है। Okay, I'll take another one. Interesting. We want Chambal fertilizer for September. Okay, now this is a very interesting thing क्योंकि बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, चाइना साइड पे हॉल्ट हुआ है कुछ तो, एंड ऑल फर्टिलाइजर स्टॉक सिंस यस्टरडे हैव बीन डूइंग वेल। सो राज भाई आपसे शुरू करते हैं, देन आई विल कम टू दिनेश सर फॉर हिज चार्ट चेक। चंबल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत जल्दी बैन में आ जाता है। मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स अंडर बैन राइट नाउ और नॉट, बट चंबल मतलब एक दिन में 4-5% का मूव आता है, बैन में आ जाता है, फिर आदमी लटक जाता है, फंस जाता है स्टॉक को लेकर। ही हैज नो ऑप्शन बट टू होल्ड बिकॉज द लिक्विडिटी ड्राइज अप। या तो वो एक बहुत बड़ा इशू है इफ समवन वांट्स टू प्ले स्टॉक्स लाइक चंबल एंड दैट टू इन एफएनओ। बाकी ओके। अगर मैं इसको कैश पर्सपेक्टिव, इक्विटी पर्सपेक्टिव से देखूं तो पोजीशंस हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप, एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन इन द स्टॉक एंड द वे मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर परफॉर्मिंग, इट माइट बी अ डे व्हेन यू सी दिस स्टॉक एट 325। वो एक दिन का होगा मूव, बट क्या होता है कि हम लोग ऑप्शंस में लेंगे या इस तरह से कुछ करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर द सितंबर सीरीज। या अगर इसमें आज 2% का 3% का मूव आ गया, ये कल बैन में चला जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। So that is why it's very difficult to trade Chambal using options. Cash में you have no issues, but options में because the ban thing, it is not advisable from your end. Perfect. Dinesh sir, what does your chart say on this? So Chambal today, more because of the news which came from China, we saw a movement, उसमें भी pullback आ गया उसके बाद. So if it starts to push above 290, then the next big resistance is straight away at 325. So momentum speed move is only above today's high in that. नहीं तो एक pullback अगर आया तो will push you down to 275 also. News related spike आया ना, so will take some time to show its true color. Absolutely. Absolutely. Okay. Moving on. To the next one is had a question. IRCTC call option 705. Someone has got 705 call option of IRCTC. Sir, can you please give us your buy price and then it will be better. Dinesh sir, Raj bhai, who wants to take this IRCTC? And Yeah, Dinesh sir, IRCTC, yeah. acha, we had 2 Saturdays back, someone had asked us on IRCTC spot, and we had spotted that the inverse head and shoulder formation था near 670-80 उसका. और IRCT अगर हम उसको forget the call, if you look at the spot chart of IRCTC, daily, इसमें एक bearish island reversal हुआ था in December, which has got covered. Now it's trying to cover the gap down near 725 to 702. First leg तो घुस गया अंदर, अब attempt कर रहा है ऊपर. So this area of 720-25 is a wall for the stock for the time being. बट बिगेस्ट पार्ट इज इसने बेरिश आइलैंड रिवर्सल को नेगेट किया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 months, which is a good sign overall. Immediate short term 725 would be a wall. Okay. Raj bhai, हाँ जी। आपका कुछ व्यू ऑन IRCTC because the railway No, stocks. I'm quite positive in this stock since 670.
ओके एंड क्या हो रहा है कि पीएसयू में जिस तरीके का मूव है, आई बिलीव कि हमें आईआरसीटीसी में भी देखने को मिलेगा। पोजिशंस वाइज lighter hai compared to the previous months. So I am expecting stock to move towards 740 at least. ओके But because since he has bought in options, तो I would say कि अगर 705 का कॉल ऑप्शन है, then keep in stop loss of somewhere close to 16 or 15 and half and hold the ओके position. I don't know his ओके buying price, but ओके yeah, that would be my solution. Perfect, perfect, perfect. Moving on. Next is Tata Power. Oh, another power stock, Tata Power. Can you share your view on Tata Power? Raj bhai, Um, I my remember answer you will and be Dinesh sir no. discussing last time कि Yes. 250 के ऊपर Tata Power will be a strong mover and we saw a move till 262. वो if our regular viewers are there with us, I think they would they can recollect it that there was a discussion on this and Tata Power about 250 was clearly said that will be one of the biggest movers. So that has happened. Now, what is your view? मतलब आपको क्या लग रहा है अभी इस पे? अभी कुछ नहीं यार, मतलब बहुत स्टॉक में, मतलब हम लोगों ने जिस तरीके से बात की थी कि वी वर क्वाइट बुलिश, और इसमें एज ऑफ नो देयर इजंट एनी बेरिशनेस व्हिच आई कैन से, बट क्या होता है ना कि स्टॉक एक बार चल जाता है 15% 10%, तो उसके बाद आपकी लेने की और फ्रेश रिकमेंडेशन। Right, right. Okay, I'll just move on from there. Next is on Excite Future to at 276. Excite Industries. Okay, viewers who are waiting for any call. So let me tell you guys that we are we are not we are the market does not look matlab, there's a confusion which is going on. Any trade from our end would be given around 2 o'clock. Rajbhai is there with us. Dinesh sir is also there. And right now the trade which has been suggested by Mr. Rajdeepak Singh is of Adani Enterprises to buy 2500 call option for a target of for a short term trader target of 170 with a stop loss of 110, and for a positional you can hold it for the entire series. The target is around 250 to 280 with a stop loss of 97. Rajbhai? Finally, UBL has moved up 1650, 1646 if I'm not wrong. Our pond peak is open here, right, Gaurav? Yes. Okay, the question is for Excite. Yeah, Excite, Excite. Yeah, yeah, yeah. क्या हुआ है कि पिछले एक महीने में, while we can say कि प्राइस बाय स्टॉक hasn't performed much, बट कवरिंग तो स्टॉक में अच्छी देखने को मिली है, और इट्स मोर ऑफ है कि क्या मैं इसको जो है, इसका जो, एक सेकेंड, हाँ, मतलब सर ऑप्शन डेटा भी चेक कर लेते हैं। देखिए कॉल्स में तो मुझे कवरिंग दिख रही है, 270 कॉल्स में भी क्लोजर है, 275 में भी क्लोजर है, और ये अपने कॉल बेसिस के ऊपर चल रहा है, तो ठीक है। 270 के जब तक ऊपर है तब तक तो वन कैन रिमेन पॉजिटिव हियर, एंड द इमीडिएट हर्डल वुड बी समवेयर क्लोज टू 280, which is having almost 26 lakh shares. So with a stop loss around 270, one can look at for the target of 280. Okay. Okay, Rajbhai, Dinesh sir, बात करते करते Nifty has moved up to 19627. Now Nifty is reclaiming that level of is trying to reach that level of 19642. That was the day's high. And अचानक से इन नहीं गौरव, इट्स सेम, मतलब जिस तरीके से ऑप्शन राइटिंग हो रही है ना, मतलब बहुत ज्यादा है ये। अभी बस इतना हुआ है कि 19,600 के पुट में आपके 5 करोड़ शेयर हो गए हैं, और 650 के कॉल में समवेयर क्लोज टू, आई वुड से कितना हो गया एग्जैक्टली, यहाँ में भी 4.5 करोड़ शेयर है यस 650 के कॉल में। तो 650 को निकालना मेरे को नहीं लगता, मेरे लिए 650 इज अ वॉल फॉर द डे। ओके अगर ये निफ्टी जो है एक बार के लिए, मतलब देन इट माइट मूव टुवर्ड्स 570,
ओवरऑल नॉट मच ऑफ डायरेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे। आप आईबी जो आप बोल रहे थे 5 की है ना, 6 की है, वो 19600 पुट की 5 की भी नहीं रह गई, 19650 कॉल की तो 4 की भी नहीं रह गई। 3.90 इज द आईबी फॉर कोई ऑप्शन लिया होगा ना, तो यू आर नॉट एबल टू मेक मनी टुडे। मतलब आपको इन द मनी में घुसना पड़ रहा है ऑप्शंस को देखने के लिए। एग्जैक्टली तो आज वही काफी इट्स अ वेरी डल डे बेसिकली मतलब देखा जाए तो इट्स अ वेरी डल डे सो व्यूअर्स हु आर लुकिंग हु आर देयर विद अस सो प्लीज आई नो देयर इज नो एक्साइटमेंट टुडे जो हमेशा होता है सो इट्स जस्ट अ बोरिंग सेशन इफ आई कैन जस्ट सम इट अप सो moving on we'll take questions we are here we'll take questions from everybody so next is bank nifty we'll take later sir we'll take bank nifty later Axis Bank, there's a stop loss hit there, sir. So we're not taking that question. Nifty on peak. Any view on Reliance Industries? Okay, two questions on Reliance Industries. So the two people are asking views on Reliance Industries. So Rajbhai, Reliance क्या लग रहा है आपको? See, Reliance and HDFC Bank, these two stocks holds your 25% weight in Nifty. Yeah, और जो भी मार्केट में वीकनेस थी वो इनकी वजह से थी। right, And we have said that Reliance is not a buy on decline. We should buy only if it is moving above 2450। और पिछले इतना टाइम हो गया, पहले तो 2500 का हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात की थी, फिर हम लोग 2450 पे आ गए। जब तक ये एक रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर रहा है ना, तब तक मैं बाय नहीं कर रहा। नीचे पे आई डोंट वांट टू बाय ऑन डिप्स, आई डोंट वांट टू बाय ऑन डिप्स, पर्टिकुलरली रिलायंस। आई विल वेट। हो स्टॉक कितना टाइम कंसोलिडेट करेगा मुझे नहीं पता। क्या होता है कि इसके कंसोलिडेशन के चक्कर में हमें जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है वहां वो मिस हो रही हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको 25% मार्केट तो हिला ही नहीं अपनी जगह से, बल्कि नीचे आया है एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस। right. बट बाकी के स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप तो इस तरीके से चल रहे हैं जैसे देयर इज नो टुमारो। Absolutely. That's another. This is another problem here. चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं. We'll just move on to the next one. Can you अच्छा please देखो, एक pass? चीज, Yeah. एक ऑब्जर्वेशन है दिनेश जी, इफ यू कैन कंफर्म इट। निफ्टी में एक बहुत छोटा सा मूव आया था, जिसकी गौरव बात कर रहा था। Hmm. उसके पहले लगातार 615 के आसपास पिछले आई वुड से इन हाफ एन आवर 12 बजे के बाद से ये 615 के प्लस माइनस 5 पॉइंट में ट्रेड किया है निफ्टी। लेकिन इस कैंडल में और उस बीच में क्या हुआ है गौरव, कि पिछली बार तुम्हारा जो मतलब उसी प्राइस बैंड में आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस 22 रुपए से अचानक से 40 रुपए हो गया था, Hmm. 19600 कॉल का, और पुट को पूरा दबा दिया। अभी इस बार डिक्लाइन आई है तो अभी कॉल्स में उस तरीके की वीकनेस नहीं आई। मैं इस चीज को क्यों दिखाना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन था कि कवरिंग अगर 600 के ऊपर चल रहा है तो आपको कवरिंग कैसे देखने को मिलती है, कवरिंग का क्या रहता है। तो आपने एक छोटा सा टिक देखा, वो टिक आपका 10 या 12 रुपए का भी नहीं था, उसके सामने आपने कॉल ऑप्शंस में एक बड़ा टिक देखा। बट क्या जो पोजीशंस कटी है वो इतनी बड़ी कटी है कि आपके पूरा का पूरा चीजें हिला दे, कि आपको लगता है कि नहीं नहीं अब तो वन वे मार्केट चला जाएगा। तो आई वाज जस्ट आंसरिंग टू दैट फेलो कि Yeah. 600 में बोला था 3 करोड़ शेयर है उनके लिए, देखिए वापस आ गया 610 पे। Exactly. Again, this is a very interesting thing मतलब यही है viewers I hope you understand today is it's a very tricky day so just do not मतलब it's better money saved is also money एक अपने पैसे बचाए वो भी एक तरह से प्रॉफिट ही है money saved is money earned that's what they say well, I'll take more questions सर PEL लिया है किसी ने someone has bought PEL 1100 call option at 25 rupees राज भाई यार सी देयर आर टू थिंग। फर्स्ट, इसका बायबैक है, 1250 में बायबैक चल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड तो मेरे को नहीं लगती है अभी। इट विल हैव सम लिमिटेड अपसाइड कि जिसने भी किया है वो ऊपर आएगा तो बेचेगा। तो अगर ये 1100 का है, मुझे लगता है कि वो लॉस में होंगे। हम्म बट अभी क्योंकि सीरीज का मिडल ही है, तो अगर हो सके तो अपनी, या तो मैं एवरेज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस स्टॉक को, एवरेज ओके मत करिए, क्योंकि सर आप हम लोग 1100 कॉल ऑप्शन है 1100 का कॉल ऑप्शन है राज भाई हाँ, तो मतलब एवरेज नहीं करना। अगर आप एक बार गलत गए हैं तो ये मान लीजिए आप 2 बार भी गलत जा सकते हैं। एवरेजिंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, लेकिन हमारा ओवरऑल कैपिटल तो खत्म होता चला जाता है। यू कैन लुक एट अदर अपॉर्चुनिटीज। आई वुड से दैट कीप एन स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 18 और 20 एंड दैट्स इट। प्लीज डोंट ओके एवरेज। हाँ। ओके
Okay, interesting. Naresh Oberoi sir, Aisha, there's a call given by our team, Rajbhai's team. I think there's a call in future or for Aisha. Rajbhai, he has bought 3400 call option. तो थोड़ा उसके ऊपर आप थोड़ा विस्तार में बता पाएंगे? ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा मूव आया है एंड आइशर हैजंट डन एनीथिंग इन लास्ट 1 month if I'm not wrong. And this is your call and put base both at 3400. So if it start trading above 3420, then I believe there should be a good reversal. And already an intraday recommendation तो हम लोगों ने long दे ही रखा है for the target of 3460. तो एक बार वहां तक का मूव आ सकता है, अगर उसमें हम लोग निकल सके तो अच्छा है. बड़ा Okay. अपसाइड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो 3470-80 का जो एक हर्डल है ना, इसके ऊपर निकलता है, देन इट माइट मूव टुवर्ड्स द प्रीवियस हाई, जो रिसेंट हाई थे 3660 और समथिंग के, वहां तक आ सकता है. Okay. Okay. Dinesh sir, your view on this? On Piramal, 1100. 1100, I just showed you, na, it's an the call had a bearish head and shoulder structure, which is suggesting it can go till 22. उसके Okay. नीचे फर्दर सिंक करेगा तो और खराब हो जाएगा. Okay. Okay. Another interesting one is I have bought sale 2000 quantity and 102. Metals have been the darling But on before that, Monday. Gaurav, just one Yeah. second. Yeah, Yeah. yeah, Gaurav, 1 second. See, today, that's why I said, na, आज का दिन है, don't try to be aggressive in option today because it's a new toy. पहला दिन. Look at this. Look at this move in the Put option if option. I'm not. Yeah. अगर आपने, Yes. this is, खेलो इंडिया खेलो चल रहा है आज पूरा फुल वॉल्यूम मैन. लुक एट द डंप फ्रॉम हियर. आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है अपने सिस्टम में तो इट्स अ बिग मनी क्रशर डे टुडे. एकदम पता भी नहीं चलेगा, विंक एंड एन आई एंड विल बी गॉन पूरा आपके सामने से एकदम. सर ये क्या हुआ ना कि जो बैंक निफ्टी के लोग आज आए हैं ना, हाँ हाँ, जो भर भर के आए हैं सब आज इधर यस, पूरा एकदम. they will try their best to keep market range bound and so far they have been successful. सो कल टुडे तो एक्चुअली अ डे जब वो जीटीटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए. तो आज अगर आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑप्शन ट्रेड लिया है ना, तो जीटीटी लगा दो और उस Dinesh हिसाब sir, से. your battery. या कर दिया, कर दिया. and I was checking my battery, you know. हाँ कर दिया. हाँ, ये आज जीटीटी लगा के ट्रेड करो. ऑप्शन में जीटीटी नहीं लगाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ फुट जाओगे इस मार्केट में. Yes. So viewers, today is a dull day. Today is one of those days where like, it's a new experiment. So इसीलिए we are also not that aggressive in giving calls. That is why the focus today is mostly on stocks rather than Nifty because it's a new day. It's a new expiry. It's heavy volumes, heavy OI data. Usually 2 crore anywhere 2 crore OI option दिख जाए तो it's like a very big wall. Today we are seeing 4 crores. So it is like almost double of that. So that is the reason even we are trying to like digest what we are seeing in the data. So yeah, iShare Motor sir, 3400 call option. Rajbhai, there is a future call given by our team. लॉन्ग करवाया है फ्यूचर आइशर मोटर पे. तो आप भी एक बार देख लीजिए, तब तो दिनेश सर से चार्ट चेक ले सकते हैं आइशर मोटर के नहीं, 3400 हमने तो कॉल ऑप्शन. अभी जस्ट डिस्कस किया ना ऐसा मतलब. अरे हाँ, सॉरी सॉरी. मैं थोड़ा मैं भी आज थोड़ा डेटा देख के मैं भी थोड़ा चकरा गया हूँ लगता है. बहुत. दिनेश सर, कैन वी हैव द चार्ट चेक फॉर आइशर 3400 कॉल ऑप्शन? Yeah, the 3400 call resistance is today's high is like a resistance 95. ओके. Starts pushing above this, then you will see the call seeing short covering above today's high. You want to ओके. see this Ichimoku cloud get in, then it moves towards 110 and a lot more possible. उसमें. ओके. ओके. अच्छा, सो एक चीज कहना चाहूंगा गौरव. हाँ हाँ राजभाई. जब हम लोग निफ्टी में कोई ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी उसके टर्म्स में बात कर रहे थे, तो वी वर जस्ट सेइंग कि भाई आज की मार्केट में स्प्रेड बना लो. हम्म. तो अभी भी 600 का पुट देखिए, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, बट आई वाज जस्ट वाचिंग द स्प्रेड. ऊपर गया था तो मैंने तो अपनी जब हमने 28 पे पुट लिया है उसके सामने देख रहा था. राइट. इवन एट करंट जंक्चर
अब आईवी लॉस ये हो रहा है, जो थीटा डीके हो रहा है, हमने वहां पर पीछे 2 ऑप्शन बेच रखे हैं, उसका फायदा मिल रहा है। और आज इस वक्त भी अगर मैं 9 रुपए में 19550 पुट बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 बेच रहा हूँ, और इसको मैं 14 रुपए 13 रुपए 90 पैसे में खरीद रहा हूँ, तो मेरी जेब से सिर्फ 5 रुपए जा रहा है। एनी सेटलमेंट बिलो 595 विल बी नेट क्रेडिट, और प्रॉफिट, नीचे या की नेट तरफ प्रॉफिट। we will be safe till 510 if I'm not wrong. हाँ राज भाई, कैन यू चेक लार्सन डेरिवेटिव डेटा सितंबर? नो, आज इसका एक बहुत बड़ा न्यूज आया है सर, कुछ ओके 25,000 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। ओके, न्यूज ड्रिवन पुश है। यस ओके सर, गॉट बट इट। एनीवे, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एटलीस्ट फॉर द अगस्त सीरीज का तो इसका बायबैक वाला था। हाँ ठीक है, तो दैट इज ओवर। सो आई बिलीव दैट लार्सन इज गेटिंग इनटू न्यू टेरिटरी वंस अगेन, कि इसका राइट। बायबैक वाली चीज भी खत्म हो रही है। 2800 का बहुत बड़ा कॉल बेस था, उसके ऊपर जा रहा है, तो नाउ एट मैं इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा। एक टाइम था ना जिसके जैसे हम आईटीसी के टर्म्स में बात करते थे कि अभी मैं इसमें रेजिस्टेंस नहीं देख रहा, सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है, कीप ऑन राइडिंग द स्टॉक। सो द सेम इज फॉर द एलएनटी। I'm not looking for any resistance here. It could be 3100, 3200, I don't know. I या will be बिकॉज positive लार्सन on this stock. Yes, sir. लंबा कंसोलिडेशन था वीकली में, आप देखिए जी फुल जी। अगस्त पूरा कंसोलिडेशन करने के बाद निकला है। सो लॉट ऑफ शॉट्स लगता है उसमें ट्रैप हुआ है लार्सन में इस बार, लॉट ऑफ शॉट्स। मैंने लार्सन कुड बी बिग मूवर सर। मतलब इस वक्त ये निफ्टी को ये उतना बड़ा स्टॉक बन चुका है कि निफ्टी को हिला सकता है। रिगार्डिंग शॉर्ट्स की ना सर, तो इसका लेवरेज बहुत कम है, बहुत कम है। मल्टी मंथ लो लेवरेज पर स्टॉक है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। मतलब नॉट करेक्ट मल्टी मंथ, आई वुड से मल्टी ईयर लो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज आल्सो सेइंग कि द थीम इज दैट ओनली राइट नाउ। इट लुक्स लाइक कि अगर आप निफ्टी को देखोगे तो यू माइट एंड अप लूजिंग मनी इन अ डायरेक्शन ट्रेड आइदर साइड इस समय यस, जिस तरीके से चल रहा है। एंड वर्स्ट पार्ट इज यू विल लूज आउट ऑन स्टॉक्स, क्योंकि आप देखोगे अरे वो निफ्टी नहीं चल रहा है, मैं स्टॉक कैसे ट्रेड करूं, और वो निकल जाता है साइड से एकदम पूरा। इस पूरे हफ्ते expiries have been boring. Apart from yesterday's expiry of Bank Nifty, your Monday's mid cap Nifty expiry was extremely flat, no या movement at all. Then Fin Nifty expiry, वो 750 का कॉल पुट दोपहर के 12 बजे वो 18 रुपए का था। हाँ सब मिलाकर वो 18 रुपए का था पूरा, और वो 18 का 2:30 बजे 6 रुपए हो गया। अब किसी की राइट हिम्मत है क्या कि 6 रुपए में वो ऑप्शन राइट करे, कॉल एंड पुट बोथ? But the settlement is at 750. So even that 6 rupees became zero. राइट। तो इतना ज्यादा डल, इतना बोरिंग मार्केट, मतलब आज ये पूरी कोशिश देखो 650 के ऊपर तो बहुत कम चांसेस है मार्केट के निकलने की। मुझे 600 होल्ड मुझे कर ना लेगा राज तो भाई भी एक कुछ है। चीज का डर लग रहा है कि ये लोग ग्रेड स्लोली 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 ट्रेडर को फंसा रहे हैं कि आप लोग स्क्वीज करो, एक्सपायरी डे आके स्टाइल सेटल, वन ऑफ दीज डेज मे नॉट बी द एक्सपायरी डे, could be यस some सर। other day they will slaughter the writers because इतना लो आईवी, इतना लो प्रीमियम, वो इतना लालच दे रहे हैं क्विक मनी का, और लो प्रीमियम माना आपका, nobody is सर मैं calculating the डराना नहीं कह risk। रहा, बट अगर आपने, हम लोग कल रात को डिस्कस भी कर रहे थे इस चीज के लिए कि एफआईएस हाँ के पुट्स में कितने लॉन्ग है। हाँ राइट सर। हाँ अब आई डोंट नो व्हाई दे विल लूज देयर मनी जस्ट लाइक दैट। राइट राइट। तो पांच वही है लाख ना, तो कॉन्ट्रैक्ट इट्स दे आर इट्स नेट लॉन्ग। इट्स लाइक जो हम लोग कोई कॉइल या स्प्रिंग को प्रेस करके रिलीज करते हैं ना, वी आर जी राइट जी। नाउ इन दैट स्टेज वेयर वो दे वांट द ट्रेडर द ऑप्शन राइटर टू गेट वेरी कंप्लेसेंट, एकदम आराम से लेजी कर दो उसको, हाँ यही करो, स्क्वीज में करके ये लोग उसको एक वन ओवरनाइट बर्स्ट देंगे जिसमें रिकवरी नहीं कर पाएंगे पूरा, वो राइटर को। तो ये वैसा बन रहा है, स्लोली स्लोली वैसा बन रहा है, टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, टेक सिक्स बट इट्स मंथ्स हैपनिंग। 3 मंथ्स, आई डोंट नो। बट जब ये होगा ना राइटर्स के साथ, तो मैनी विल लूज देयर। आई नो इट्स एकदम स्लोली स्लोली आ रहा है उस जोन में, एकदम स्लोली स्लोली उस जोन में।
अभी क्या है कि लोगों को जो सोशल मीडिया में जिस तरीके के वो वहां के लोगों को असलियत पता चल रही है धीमे धीमे कि सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में। यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स की भी जैसा आप बोल रहे हो ना, बस समय लगेगा बट होगा जरूर। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। हाँ, आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स नॉट वेरी फार, इट्स कमिंग वेरी क्लोज। पूरा स्क्वीज टाइट कर रहे हैं Okay. वो। Sorry, sir. Sorry, Rajbhai. Sorry, sir, to interrupt in between. There's one question, interesting one, is Granules India. And I think someone has got why I have asked this. I don't have a position here, making it very clear. This one stock which was discussed in the morning with Rajbhai. See, So, see, chart I wise, should excuse granule, myself. Biased one. या इसका अगर above today's high, the momentum will continue because वहां थोड़ा सा आज ओवरऑल ट्रेंड को लेके पुल बैक आया है. यू वांट टू सी इट पुल बैक विच इज नॉर्मल. इसके ऊपर मोमेंटम गेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ग्रैन्यूल्स बिकॉज जब फार्मा रैली हो रहा था ना, इफ यू सी मंथ्स ऑफ जुलाई, इसका इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं था. यू कंपेयर औरो, ग्लैन और सन फार्मा, सिप्ला, उनके सामने इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था. तो द ट्रेंड सीम्स राइट नाउ कि नो एक निकला दूसरा पीछे से आया. तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यस, ऑल्सो Okay. join a parallel line. Okay. Okay. Rajbhai, Dinesh sir, one thing I'll ask you all, very like from a from a what do you call any level point of view would be Nifty now has come to 19,623. Again, it has moved up. So any level from where you can expect short covering or like any level where you expect that कि हाँ इसके बाद ऊपर ही expectations है. At least 15 minutes above 19,650. Okay. Okay. राजभाई आपका? गौरव, अगर ये आज 700 पे भी सेटल होता है ना, हम्म. तो भी मैं बाय नहीं दे पाऊंगा. अच्छा. सी, देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर बायस, वन इज योर डेटा. ठीक है. both for me, both data and bias is on the negative side. I am not giving put options because पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से हुआ है उसको देखकर, that's why the first thing I could have even gone for the call spread, right? Why I have opted for the put spread? See, the data is not that strong for me. मुझे ये this is more of a manipulation which we are witnessing in last 3-4 weeks in the market. किस एक्सपायरी को सबड्यूट कर रहे हैं, जो दिनेश जी बोल रहे हैं वही है. हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि 10 रुपए का पुट लेने में, मतलब खरीदने में जाता क्या है, ज्यादा से ज्यादा 10 का जीरो होगा, मेरा केवल 500 रुपए का ही तो लॉस होगा. या 650 का कॉल है, 7 रुपए का है, मेरा 350 रुपए का ही तो लॉस होगा. बट इसको ये इतना स्क्वीज कर दे रहे हैं, इतना स्क्वीज कर दे रहे हैं, मतलब आपका वो धीमे धीमे जीरो हो रहा है. एंड इफ समबडी कैन मैनेज निफ्टी, देन थिंक अबाउट इट. Your mid cap index is continuously moving up, your small cap index is continuously moving up. People are managing your headline indices. So I am a bit Absolutely. So skeptical right now. got it. So we just I'll ask you this way then. Rajbhai, any stock that is on your radar? Let's discuss stocks today. Any stocks for September expiry? मतलब there are 200 stocks and all those stocks are on my radar. Exactly. The one stock. So let's see for our viewers, Rajbhai, one stock which we can discuss. See, I'm still a bit positive in the pharma space, and the stock which we just discussed, Granules, I'm still hopeful around here. See, as of now, अभी केवल हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है. See, post result, थोड़ा खराब रिजल्ट आया था. Stock has given up most of the gains whatever it has witnessed from the month of May to June or July, you can say. ये जो डिक्लाइन हुई अभी जस्ट रिट्रेस हुआ है.
If it is able to surpass 325, then the next target for the stock could be somewhere close to 350 or even higher. For me, it's a more of a buy on decline or accumulation sort of stock. Decline seems to be limited. थोड़ा सा फ्यूचर्स में इसकी वो कम है, आई वुड से क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी उस तरीके का नहीं है कि फ्रीली अवेलेबल हो. वन शुड look out for the levels and then enter. But for me, instead of protecting the stock at on lower level, मैं शायद इसको 316 315 पे बाई करूंगा, 307 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 335 का या 340 का मैं कॉल भी बेच दूंगा 4 रुपए का. तो मेरा ओवरऑल यहाँ पर रिस्क वर्ड ज्यादा फेवरेबल बनता है अगर मैं ग्रेनुअल्स देख रहा हूँ. थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी हुआ था, एंड जस्ट ऑन अ सेफर साइड, it's more of a bias also here. Sunil sir, they are here. FII, some big people who have big money who can manage something. So they, it is what he who should not be named. Basically, I'll just say it that way. Okay. So for they, you can just consider it as big players in the market with big deep pockets. Those are the ones. Okay. So viewers, we'll take some break. Matlab, me, Rajbhai, and Dinesh sir will take some break. Sumit is here. Sumit, are you there? हाँ भाई, पिछले 1 घंटे 10 मिनट से निफ्टी ने कुछ नहीं किया है. जब मैं आया था तब भी 615 Yes, पे था, अभी भी 615 पे है. Exactly. Nifty is at that level only since past 1 year. Sumit is here with us. So yes, viewers, Gaurav, I'm seeing a lot yes. of people have doubts on GTT, which has been recently launched from our end, and some doubts regarding the brokerage plan as well. So Sumit, over to you. You can explain the new feature, the GTT feature that we have, Uh, and also the brokerage plans for our viewers. So viewers, me, Rajbhai, Dinesh sir will be back at 2 p.m. Until then, Sumit is here with you guys. So over to you, Sumit. Great, great. Thank you very much, Gaurav. So just allow me a minute so that I can just clear this up, and I will be with you in a second. Right. Um, so allow me to share my screen. Yeah. I believe my screen is visible. Yes, Sumit, it is visible. Yeah, great. So I heard. Just a second. Rajbhai, can you go on mute, Rajbhai? Hi. A while ago I was listening to the experts, and recently we have launched this GTT order, and the sir mentioning कि आज GTT order लगा के ही काम करना चाहिए, otherwise the market is really very choppy going on both direction, तो किधर ना किधर तो आपका मतलब होने का chances है. So all you need to do is you need to go on to FNO. यहाँ पे आपको जाना है प्लेस ऑर्डर पेज पे. अब प्लेस ऑर्डर पेज पे you will have to just select the stock that you want to trade. Let's say निफ्टी 600 है, ठीक है. निफ्टी 700 का लेता हूँ मैं कॉल, नहीं सॉरी 600 का कॉल लेता हूँ मैं, विच इज लाइक 32 रुपीज गोइंग ऑन एट द मोमेंट. मुझे बाय करना है. I want to buy 50 quantities. Current order price is 32 rupees. यहाँ पे this GTT button you will be able to see. Let's say आपने बटन को उसको ट्रिगर को ऑन कर दिया, and then यहाँ पे you will be able to put stop loss and target trigger price. This was the much awaited feature from the customers that I have spoken to all these days. वो लोग, it was much awaited feature as well from the customers कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है. Finally it is there and you will be able to use it. तो अभी जैसे ये 32 रुपया चल रहा है, let's say for example मुझे stop loss लगाना है 25 rupees का. Just giving an example, there is no
दिस इज जस्ट फॉर प्योरली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नथिंग रिकमेंडेशन। टारगेट मेरा होगा लेट्स से 40 रुपीज का। अब 25 रुपए का टारगेट है, 40 रुपए का सॉरी 25 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, 40 रुपए का मेरा टारगेट है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं बाय कर रहा हूँ इसीलिए। सिमिलरली यू कैन डू दिस ऑन दी सेल साइड एज वेल। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आ जाएगा एंड टारगेट आपका मतलब सॉरी टारगेट आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। यानी कि लेट्स से 40 will be your stop loss and 25 will be your target or something like that. You can even change this using the percentage, and then you can also put a limit price for these in order to the trigger price for that कि आपको इस पे करना है। You will see the margin required is like only 1600 rupees. अगर आपके पास already कोई position है, you can click on the open position पे, open position. You can simply click on place order. मैं इसको 45 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, let's say for just for the sake, because I am looking to actually place the order. Proceed. आपको मेरा ऑर्डर चला गया, योर जीटीटी ऑर्डर रिक्वेस्ट हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली। ओपन पोजीशन में भी हुआ नहीं होगा बिकॉज लेट्स से जीटीटी ऑर्डर बुक में मैं यहाँ पर जाता हूँ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका यहाँ पे जो सेल है, राइट, जो सेल आपका रहेगा, क्या करते हो whenever you're trying to buy and you trying to put stop loss and target price, that is the sell order। तो आपका सेल ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर अभी 25 रुपया डाला था एंड 50 रुपया डाला था, 37 रुपीज का मेरा प्राइस चल रहा है। Let me just cancel this particular one. Yes, okay, the earlier one I have cancelled, so this one is active right now. Status is inactive because अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर आपको इधर जाके मॉडिफाई करना है तो यू कैन गो एंड यू कैन मॉडिफाई दिस एज वेल। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। आप ऑर्डर बुक में जाइए, ऑर्डर बुक पे आप जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी कि ये आपका ऑर्डर स्टेट में भी है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सेम थिंग यू कैन कम हियर एंड यू कैन सी इट हियर एज वेल। सॉरी, GTT book पे, sorry, हाँ, so here is the GTT book. तो here you will be able to see it कि this is what you have actually placed. अगर आपका market order place हो जाता है and then either these trigger price get executed, so it will cancel other one and the position will get square off. Cancel करना, you can click on cancel. Yes, you can simply click on OK and the ऑर्डर बुक में आप जाके देखोगे आपका ये जो ऑर्डर पे था बाय मैंने डाला था 19600 का, इसको भी मेरे को जाके फिर कैंसिल करना होगा। कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल कर दिया, ओके डन, ठीक है। नाउ आई डोंट हैव एनी लाइव ऑर्डर्ड पोजीशन इन दिस केस। जो भी है वो अलग है। दिस वाज समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड माय सेल्फ, आई थिंक ये मेरा है। जस्ट मूविंग दैट, that's it. So that's how you create your GTT. Again, GTT में क्या होता है कि you will be able to place stop loss as well as target at the same time. So that's how you can do it. Now you can also click on GTT here. Options में तो आप गए, यहाँ पे से आपको ट्रिगर करके आपको करना पड़ा। इधर में भी आपके आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू जस्ट प्लेस सिंगल ऑर्डर यू कैन डू दैट, एंड इफ यू वांट टू प्लेस द स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर प्राइस व्हिच विल बी, दोनों में से कोई भी अगर ट्रिगर होता है तो इट विल कैंसिल, वन विल कैंसिल अनदर वन, राइट। इधर आपको अगर इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगल, व्हाट इज ओसीओ, इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड हियर। सिंगल इज द सिंगल जीटीटी अलाउज यू टू प्लेस an order at a limit price and a trigger price. Only when the trigger price is met, your GTT order will be sent to the exchange. So remember कि this keeps monitoring, and जब वो trigger price meet होता है then only the order will be sent to exchange for the execution at a limit price. One cancels other का मतलब ये हो गया कि अगर दो चीज मैंने डाली है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, दोनों में से कोई भी एक ट्रिगर होता है तो इट विल कैंसिल दी अदर वन। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज मैं बाय कर रहा हूँ एंड मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट विल हिट द टारगेट। सपोज यू हैव केप्ट द टारगेट एंड इट विल हिट द टारगेट। तो टारगेट अगर आपका हिट होता है
तो स्टॉप लॉस जो आपके सिस्टम में पड़ा था वो कैंसिल हो जाएगा। सपोज अगर मार्केट अगेंस्ट जा रहा है आपके एंड इट मीट्स द स्टॉप लॉस, तो जो टारगेट जो सिस्टम में पड़ा हुआ था इवन दैट विल गेट removed from the system. So basically that's how you enter this GTT in the system. So GTT ka the other thing is GTT is good till cancel, good till trade. तो ये आगे भी चलते रहेगा, it's not only for intraday. So there is someone saying by default it's a GTT sell order. Sir वो GTT sell order by default नहीं है, because I was buying. तो आपका जो square of order होता है, so all you need to understand is if you're trying to buy it, I have to put something here. Let's say Nifty in 600. Because I was buying, आपका जो stop loss होता है that is a sell order and target even is a sell order, right? तो अगर आप buy कर रहे हो तो अगर ये these are like nothing but a square of orders, right? अगर आपने buy किया है तो square of orders are always sell. Similarly अगर आपने sell किया है, your square of orders are going to be buy, right? तो these orders are going to be as a buy orders in the system. It will remain as a buy orders in the system because these are like square of orders, because you have actually initiated a sell order. तो आप जब उसको square off करते हो तो आप उसको buy करते हो. So that's why it is so by default it is not sell order only. That was just the example that I gave you for the buy one, buy के लिए. So it was like that. Um, is there any app? If yes, please share link. Sir, all you need to do is we have this all-in-one app available in the market. All you need to do is you just need to go into the the Play Store and just type ICICI Direct, and then you will be able to see the options, and over there you can simply just download the app and then log in using your credentials, and you'll be able to help it. We have to keep a trigger and limit price same in GTT. Not necessarily. आपका जो limit price जैसा आप पहले डालते थे, you can change it. This is just an example. अगर आप जैसे मेरे example में यहाँ पर दिख रहा है 37 रुपीज मैंने डाला है, and you can have anything करने के लिए. दिस इज जस्ट के ये प्राइस हिट होगा तो इसी प्राइस पे आपका ऑर्डर चला जाएगा. If you want, I believe lots of people will be having plenty of questions. When you go through the process, try to go through this GTT facts and try to read this at least once, and make sure you understand it. So bulk of your doubts, bulk of the people having majority of the doubts will get cleared by this. And whenever you try placing orders, make sure you read this first, and you understand it. Case में क्या क्या है क्या क्या नहीं. I clearly understand because this is a feature that has been um, uh, you know much awaited by lots of people, but there will be some or the other doubt that you'll be having. So please, I request everybody to go through all these questionnaires. I mean, there are like 27 questions that is given, so please go through it thoroughly, and then try to create GTT orders, and you will be able to cap your losses, or you'll be able to put the profit in your you know profit basically. Yeah. So what about intraday trading ideas in WhatsApp? Sir, at the moment you will be getting the first and foremost, you need to subscribe to the ICICI Direct WhatsApp notifications. So उसके लिए first of all you need to go onto the settings button में you need to go onto the manage subscriptions. Settings में आपको जाना है manage subscriptions में. Here there is a WhatsApp subscription. So आपको सब्सक्राइब करना होगा. Once you have subscribed to it, you will get the suggestions. अभी जैसे मेरे को आया हुआ है,
you will be able to see buy Bharat Dynamics Limited at 1200, target 1295, stop loss 1145, and holding period of 14 days. So this is the one that you will get from the ICICI Direct. Make sure you have the green tick against the the uh, ICICI Direct, because that will be the genuine one. Make sure you always subscribe to the genuine ideas, and every day you will get some of the other new investment ideas on the platform, on the WhatsApp. Sorry. Right. So okay. So on top of this, lots of people, they would be like, trading strategies. Lots of people, they don't. I'm just repeating this once again because I have already covered this earlier, but I would like to emphasize more. The people who would like to trade strategies, जैसे राज भाई थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो it is much better to go with the spread. तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट भी कैप्ड है तो लॉस भी कैप्ड है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सिंपली गो ऑन टू दी एफएनओ स्मार्ट टूल्स. आप यहाँ पर बास्केट ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए. Now you have this predefined strategies available here. ठीक है. So you can just click on quick start. Quick start पे आप क्लिक करोगे तो you'll be able to see the whole set of strategies which is like bullish, bearish, neutral, more. आज आप देख सकते हो कि निफ्टी has also reached now 19633. It looks like a bullish move at the moment. So um, you can have some bullish strategies here. You can choose from bullish strategies here. A bull call spread अगर आपको चाहिए तो you can simply click on bull call spread, and here you will be able to see कि 19600 buy करना चाहिए, 19650 sell करना चाहिए. 19600 का price is like 44 rupees, and 650 is like 11 rupees, 12 rupees going on at the moment. If you think नहीं आपको ये नहीं चाहिए, you want to go a little bit in the money, let's say 700 आपको, sorry my mistake, 700 आपको बाय करना है, या फिर सॉरी 600, 550 आपको बाय करना है, and then 600 आपको सेल करना है, then you will be able to do that. But in this case you will be able to see कि आपका payoff, expiry payoff is going to be 847, and then the max loss is going to be roughly around 1600 rupees. So approximately 1 is to 2 का ratio है. So 1 is going to be a profit and 2 is going to be a loss. So this is going to be the case. आप यहाँ पर मार्जिन भी देख सकते हो कि आपको 22,500 roughly around you should have in your pocket in order to trade this. इसको आप डन कीजिए, बास्केट का नाम दीजिए 50 bull seed. Will be able to see the same. If you want to change the quantities, you can do that. Market limit as self-explanatory. Just click on view margin. You'll be able to see that आपको 50,000 का margin आपके पास available होना चाहिए. And then if you have any positions available already and you want to avail the margin benefit, just click on it. Avail margin benefit is nothing but it will send the buy order first in the system, and then with some delay it will send the sell orders. Once this is executed, this will be executed too, and then you will be incurring only 50,000 का margin. Otherwise अगर ये uh, if you try to sell naked, you will be able to see that, sorry, आपको यहाँ पे 225 का आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट आ जाएगा. द रीजन इट वाज शोइंग ओवर देयर बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सम लाइव पोजीशंस अवेलेबल. अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यू विल बी एबल टू सी कि मेरे को अगर मैं इसको नेकेड सेल भी करता हूँ तो इट विल ओनली इनकर 43. अगर मैं निकाल देता हूँ इसको, it will be like 225 is what you should have in your account in order to trade अगर naked करना है तो. So it's always better to go with the spread where you will be able to save in on the margin requirement. So you can clearly see 235 से सीधा 50 पे आ गया for 2 lots. अगर ये single lot करूँ तो 1,18,000 से it has dropped down to 25,000. So you can clearly see 1/4 हो जाता है सीधा, less than 1/4. So it becomes really very easy. um, so yeah, so always try to use this and try to hedge it, especially in these kind of market conditions. um, Also, guys, if you have any questions, you can always put it in your chat box. um, I will be able to go through the questions on that. If I miss it while explaining, please bear with me. इसमें
flash trade, I believe lots of people will be asking questions. You know, flash trade may, if you try to trade, you will incur only 7 rupees as a brokerage charge on the buy side, and then 7 rupees as a brokerage charge on the sell side basically. So you will be able to do that if you want. Once you have taken the position, you will be able to see this green line available here. अगर आपको ऐड करना है, you can add it. If you, अगर आपको exit करना है, you can simply exit it. If you have multiple positions available here, just click on exit all and you will be able to exit your position straight away. बहुत सारे लोग अभी ये जो मार्केट का जो कंडीशन अभी जो चल रहा है, आई मीन let me just go through this chart first. Now I'm able to see कि अगर इसको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर से ऊपर गया, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अब थोड़ा ऊपर की तरफ नीचे चल रहा है. एंड देन एवरी सिंगल चार्ट हियर यू विल बी एबल टू सी कैंडल. यहाँ पे लो देखो ना, 626 का लो है एंड 640 का हाई है, तो इट्स लाइक 15 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर आ गया. 26 से 37 10 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर है. देन 17 से 35 रफली अराउंड 17 18 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर है. So in these kind of choppy market conditions now, the best the tool available with ICICI Direct is, you know, you can use execution algo. अब इसको मैं let me see, मैं इसको यहाँ पर इसको देखता हूँ. Let's say 19600 at the money का जो चार्ट है, at the money का चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको let's say at this particular number, so low is like 26 and high is like 42. कितने का डिफरेंस हो गया? रफली अराउंड 14 16 का डिफरेंस हो गया. 25 टू 40 15 रुपीज का डिफरेंस. 23 टू 29 6 7 रुपीज का डिफरेंस. 24 से 29 अगेन 6 7. 27 से 36 अगेन 8 9 रुपीज. सो हियर यू विल बी एबल टू सी के 8 9 रुपीज का मूवमेंट हर कैंडल में है, एंड दैट टू विद इन 5 मिनट्स. इवन इन दिस पर्टिकुलर कैंडल आप देखोगे यहाँ पर लो इज लाइक 39.8 एंड हाई इज लाइक 44.9. तो अराउंड 5 रुपए का तो डिफरेंस है ही है, अभी तो बन रहा है कैंडल. एंड हियर इट इज लाइक 37 का लो एंड 49, तो रफली अराउंड 13 रुपीज का मूवमेंट है इन 5 मिनट. अब ये 13 पॉइंट्स का मूवमेंट है, आपको कैप्चर करना है क्योंकि मार्केट इज गोइंग अप एंड देन डाउन, अप डाउन अप डाउन सब कर रहा है. तो इसके लिए what you can do is you can just go to the execution algos and then try to make use of scalping algo. Scalping algo is again for the people who would like to trade very frequently where the market is very choppy, going up going down, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे continuously कर रहा है. And I showed you कि every single candle is having at least, you know, 10 to 15 rupees, किधर 7 रुपया है, किधर 10 रुपया है, का मूवमेंट एटलीस्ट 5 मिनट में तो आ ही रहा है. तो what you can do is you can go with this Nifty 16, sorry my mistake, 19600 का कॉल था. माय व्यू इज बुलिश. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा. नॉर्मल है मेरा ऑर्डर, मेरा मैक्सिमम ओपन क्वांटिटी लेट्स से मैं 200 क्वांटिटी रखता हूँ. आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जाम, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लाइव ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर वन. स्लाइसिंग क्वांटिटी मेरा लेट्स से मैं 50 क्वांटिटी रखता हूँ. Start time and end time is self-explanatory. Start price, again you can start with your limit price or you can start with the market price. Limit price में if you want to, let's say you want to start at 42 rupees. जब तक 42 नहीं आएगा तब तक it won't start. Now these are the two important parameters for this scalping algo. अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं आई वाज लुकिंग एट दी ऑप्शन का कैंडल फॉर दैट 19600. अब 19600 में एवरी सिंगल कैंडल का मूवमेंट वाज समवेयर अराउंड 10 टू 12 रुपीस, 10 टू 15 रुपीस, राइट. तो 10 रुपए का मूवमेंट तो वो ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है उसमें. ये सिर्फ 44 रुपए वाले की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए. तो वो 10 रुपए का मूवमेंट तो ऊपर नीचे हर 5 मिनट में हो ही रहा है. तो यहाँ पर इफ यू वांट टू पुट एन एंट्री डिफरेंसेस ऑफ लेट्स से 3 रुपया एंड 5 रुपए का आपका प्रॉफिट डिफरेंस होगा. नाउ व्हाट इट मींस, बिकॉज आई एम बाइंग, तो every single time when it drops down from the start price 42 पे एंट्री होगा, so 42 से 3 रुपया अगर वो नीचे एंट्री ड्रॉप होता है which is like 39, तो 39 पे it will try to buy this 50 quantities. 39 से और 3 रुपया नीचे ड्रॉप हुआ,
which becomes 36. So 36 पे it will again try to buy another 50 quantities. And as I said, मार्केट काफी चौपी है, तो नीचे भी आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी जा रहा है. तो 39 से अगर वो 39 से 39 प्लस 5 इज लाइक 41, तो जैसे ही वो 41 आएगा इट विल बुक, it will try to square off one quantity that it has already accumulated. ठीक है, तो वो कर सकता है, and it will do that. Now this was on the buying side. Similarly on the selling side आप ये चीज को वापस यूज कर सकते हो. Selling side में क्या होगा कि market is currently 47. Now remember, when you're using this you have to have a good amount of margin available, because this is like a naked entry it will taking, it won't be taking any spreads or anything. तो आपका जो margin requirement रहेगा वो काफी हो जाता है basically. तो अगेन हियर एवरेज एंट्री डिफरेंस विल बी 3 रुपीज एंड 5 रुपीज. तो जैसे ही 46 से 49 होगा, लेट्स से मैं मार्केट में ही ले लेता हूँ, तो मार्केट पे मैंने लेट्स से 47 पे मैंने एंट्री किया, तो 47 प्लस 3 50 होगा. जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 50 पे इट विल अगेन सेल वन मोर. 53 पे अगेन इट विल ट्राई टू सेल वन मोर. जैसे ही मार्केट 53 से 5 रुपए नीचे आता है, विच इज लाइक 48 रुपीज, तो जैसे 48 टच करेगा इट विल ट्राई टू स्क्वायर ऑफ दैट. तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 5 रुपए का प्रॉफिट आपने बुक कर दिया है. नाउ हियर वी हैव दिस वन साइडेड algo which is available. The strategy will not create net open position in opposite direction when enabled. तो इसका मतलब ये हो गया कि you only want to go one direction. Earlier what used to happen के suppose आपने 200 quantities दिया हुआ है and your quantity used to get exhausted. आपने 50 बाय कर लिया, 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 तो 5 यानी कि 4 टाइम्स आपका बाय हो गया है. अब आपका एग्जॉस्ट हो गया है, तो अगेन इट विल ट्राई टू, अगर आपका मार्केट अभी प्रॉफिट साइड में जाने लग गया, 5 रुपए ऊपर की तरफ जाने लग गया, राइट, फ्रॉम 50 ऑनवर्ड्स, तो 50 आपके पास 4 लॉट जमा हो गए हैं, 50 रुपीज पे आपका पोजीशन खड़ा है, तो 50 के बाद 55 होगा, उसके बाद 60 होगा, 65 होगा, 70 हो गया. अब एक बार 70 में आपका टोटल क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो गया, एट 75 इट यूज्ड टू सेल अर्लियर एज अ नेकेड, जो कि अभी नहीं होगा अगर आपने इसको वन साइडेड कर दिया तो. इट विल कीप बाइंग it, and if it tries to sell at 75 it won't sell, it won't create any naked position, or it won't create any position in that case. Please bear with me, there is a lot of noise coming from the outside, so that's how it works. Okay, I believe this is like a very good tool available in the market, and you can literally make profit, and we have a good the success rate on this tool, especially when this AB says that 90% of the traders lose money. So this tool is having a way good success rate as compared to what it is saying. So I can see some of the questions here. Let's take the flash ones. Flash trade is not reflecting in the positions many times. Flash trade is not reflecting in the positions many times. Sir, it will. अभी मेरे पास position तो है. Flash trade का I have taken this particular position. अच्छा, ऐसा बोल रहे हो आप. अभी लोड किया तो नहीं दिख रहा था. Okay, understood. तो यहाँ पर you will be able to see it. At the same time, you will be able to see it here as well. कि आपका position अभी क्या है क्या नहीं करके, ठीक है? You'll be able to see it in the open positions as well. But I see what you mean by it. But अभी तो दिखाई दे रहा है. Earlier refresh करना पड़ा था मेरे को to see it. I got it. I will take a note of that. Why is only calls made as most traded is flash trade even when market is down? Um, Market अगर सर it all depends upon the number of volume and the open interest के उसमें क्या है. So even if you see calls, all you need to do is just click on put. अगर आप put करोगे तो at the back the chart will change to the put, and then you will see the exact the price for that particular put क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So you'll be able to do that. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो all you need to do is just click on this star icon here. आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना होगा, एंड देन a new screen will pop up. At the moment I have the position available, so it won't allow you to go and change anything as a parameter. All you need to do is you just need to keep trading this particular position
कंटिन्यूसली गोइंग बैक एंड फोर्थ, आपको इसमें ही ऐड करना है, इसी को एग्जिट करना है, इसी को ऐड करना है, इसी को एग्जिट करना है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू एग्जिट ऑल यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एग्जिट ऑल। तो आपको यहाँ पे ये स्टार बटन दिख रहा है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू नीड टू ठीक है, you need to change the contract as per your requirement, then you have to save it as a favorite। अगर आपने कॉल को फेवरेट लिया है, when you select call in while going into the system, अगर आपने कॉल को फेवरेट लिया है and then you try to trade call, you will be able to trade call, but if you try to trade put, it will tell you that you haven't set favorite as a put because you have actually chosen it by yourself। अगर आपने सिस्टम के थ्रू लिया और होता तो it would allow you to trade call and put both at the same call or put as you wish depending upon the market direction। but अगर आपने सेव कर दिया है and you have saved it as a favorite, then you have to trade but that put or call that you have set it as a favorite। उसके बाद message is coming as the stop loss percentage field is empty, please enter the stop loss percentage। okay, so in this case all you need to do is when you try to trade using intraday options, so intraday में there is a field called as stop loss difference। stop loss difference का मतलब ये होता है कि अगर आपका करंट मार्केट प्राइस, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ वॉच लिस्ट में, अगर आपका करंट मार्केट प्राइस लेट्स से इन दिस केस इट वाज 50 रुपीज राइट, द वन दैट वी आर लुकिंग एट 60 रुपीज, ये वाला चार्ट, इसका प्राइस अभी 61 चल रहा है। सो अगर आपको लगता है कि इसका स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होना चाहिए विच इज लाइक 42, लेट्स से 50 होना चाहिए, तो 60 का प्राइस चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 50 का होना चाहिए, तो आपका डिफरेंस हो गया 10 रुपया, तो यू हैव टू पुट 10 रुपीज इन दैट डिफरेंस। तो 10 रुपीज का जब आप वहां पर डिफरेंस डालोगे तो जिस प्राइस पे भी आपका एग्जीक्यूट होगा वहां से 10 रुपया नीचे विल बिकम योर स्टॉप लॉस, अगर आपने बाई किया तो। ऑफ कोर्स फ्लैश में बाइंग अवेलेबल है, तो दैट इज द स्टॉप लॉस डिफरेंस दैट इज अवेलेबल इन दैट एंड दैट्स हाउ यू हैव टू पुट इट। ब्रोकरेज ऑन स्कैल्पिंग अल्गो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, इट इज 7 रुपीज पर ऑर्डर। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एग्जीक्यूशन अल्गो में जाते हो, आप not only scalping, it is all for the execution algos। आप TWAP order slicing ले लो या TWAP price band ले लो, averaging ले लो, scalping ले लो, अगर आप यहाँ पर आते हो because you keep churning back and forth, आगे ऊपर नीचे होते रहता है, so that's why it will be 7 rupees per order। 7 rupees per order का मतलब ये होता है कि let's say मैंने buy कर रहा हूँ मैं intraday, और यहाँ पे मेरा max open quantity is let's say 1000, and if you're trying to slice a quantity of 400 in one go, let's say 1200 है मेरा, ये मैं 400 का कर रहा हूँ, तो 400 it will keep sending every single slices, तो एक स्लाइस का आपका 7 रुपया हो जाएगा on the buying side and the same thing एक स्लाइस का आपका हो जाएगा 7 रुपया on the selling side। so for this 400 quantities, not on the per lot basis, so you will be able to make a significant amount of money in that case अगर आप ऐसा करते हो तो। how to change the setting for the flash trade chart to 15 minute every time it opens with 1 minute settings। okay, flash trade में आप जाओ सर, यहाँ पे आपको 15 मिनट आपको करना है and you will be able to trade it here। आपको 15 मिनट का सेटिंग्स करना है and you will be able to do it। अगर आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हो तो there is a possibility that it might refresh it because it considers as a new screen, so but here you will become and you will be able to change it to 15 minutes, 1 hour या 5 minutes। by default it is kept as a 1 minute because 1 मिनट में भी आप देख सकते हो कि काफी कुछ हिल जाता है मार्केट केस में। if you want to see the candles you can put it in a candle format, and if you want to compare this with the Nifty का chart and you can clearly see कि Nifty का chart यहाँ पर अभी 19650 हो गया है and at the same time जो मेरा कॉल है वो 55 पैसे से 60 पैसे हो गया and so on so forth। so Nifty का chart is there for you to compare it। doesn't allow multiple indices, of course sir, it doesn't allow you to trade multiple indices or any other contract because this is a tool designed for the scalpers, or the people who want to go in and out of the trade very frequently। तो अगर आप इस ट्रेड में
हो and you want to trade बैंक निफ्टी, तो it won't allow you because आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी में ही आपको चार्ट पे देख के आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहना पड़ेगा कि 200 क्वांटिटी है मेरा, तो 200 क्वांटिटी में बाय करूंगा, सेल करूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी मार्केट काफी यू नो ये होता है. अब नाउ हियर आई एम नॉट एबल टू चेंज इट एनीथिंग, बट लेट मी जस्ट शो यू ऑन दी वॉच लिस्ट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन चेन. अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका 19650 का चार्ट, 19650 का चार्ट आप देखोगे यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, वन साइड ऊपर चलते जा रहा है. तो जब वो आपको लग रहा है कि मार्केट मेरा ऊपर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है ना, इफ आई चेंज दिस टू लाइन चार्ट, तो आपको दिखाई देगा ये ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, जाया जा रहा है. तो आप उसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ. अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा नीचे आया, तो यू कैन स्टार्ट एग्जिटिंग योर पोजीशन एंड ट्राई बुकिंग योर प्रॉफिट. And this happens really very quickly. Even you can see it here, right? अब ये 1255 से लेके and this particular कैंडल में अगर आप देखोगे 5 मिनट का कैंडल है, अगर मैं इसको 1 मिनट का कैंडल कर दूं, तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि भाई क्या हो रहा है इतना फास्ट. आई मीन 1 मिनट के कैंडल में यू विल बी एबल टू सी कि प्राइस देखो ना ऊपर नीचे कितना हो रहा है. लो वाज 15.5 and high was 21.8 at this particular candle. And this particular candle, it was low was 19.55 and high was 26.7. 7 रुपया एक ही मिनट के अंदर मूवमेंट आ गया. तो वो 7 रुपए का जो मूवमेंट हो सकता है वो इतना फास्ट हुआ हो, एंड यू वोंट गेट टाइम टू change the contract, and you won't get time to type the contract and change it and everything. And that's why this is designed for the scalpers कि आप ये एक मिनट के अंदर ही आप काफी कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो. आप एंटर करो and then you can exit it. Now if the market, now here you can see the red candle because the market is coming down or whatever is happening. तो यहाँ पर भी अगर आपको एग्जिट करना पड़ा, तो यू आर नॉट गोइंग टू गो टू दी डिफरेंट पेज एंड एवरीथिंग. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द एग्जिट बटन एंड योर पोजीशन विल गेट स्क्वायर ऑफ इमीडिएटली एट द मार्केट प्राइस. तो दिस इज रियली वेरी ये है. You will you provide dark theme and also chart saving tools which can be used for the every script, sir? We will try to. We have taken your request in this case, and I would request, please, Kumar Sharma ji, please don't try to spam on the chat. Your queries are actually looked at, even if the session goes finished. After that also we do look at it. And yes, if flash trade not squared off same day, what will be the brokerage if carried overnight? Sir, the brokerage is going to remain the same. Suppose now there are two different things happening here. First is, if you are taking a position on the flash trade, next day when you come and when you try to look at your positions, and if you try to execute the same from the flash trade, मतलब आपने आज पोजीशन ले लिया, कल आपने टिल एक्सपायरी वाला पोजीशन ले लिया, आपका पोजीशन रनिंग हो रहा है, कल परसों नरसों आके अगर आप इधर से ही एग्जिट करते हो, तो अगेन इट विल बी द सेम 7 रुपीज बाइंग एंड 7 रुपीज एग्जिटिंग. लेकिन अगर आपने यहाँ से नहीं होके अगर आप यहाँ पर चले जाते हो, ओपन पोजीशन में चले जाते हो, एंड आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम द फ्लैश, एंड इफ यू ट्राई टू स्क्वायर ऑफ हियर, तो यहाँ पे जो आपका जो नॉर्मल प्लान में जो आपका ब्रोकरेज लगता है, इट विल इनकर दैट. सो इट इज ऑलवेज रिक्वेस्टेड कि आप यहाँ से पोजीशन ले रहे हो तो पोजीशन यहाँ से ही लो और यहाँ से ही एग्जीक्यूट करो. सो इट विल बी बाइंग ऑन द at 7 rupees brokerage and selling at the 7 rupees brokerage. But अगर आप यहाँ से आके करोगे, तो because system don't understand कि ये position कहाँ से आई है, because we have several different products available. You can clearly see flash है, execution algo है, spring है, one click FNO है, basket order है, strategy builder है, easy options है, and so on and so forth. So इधर जो this is like a holy grail, right? It doesn't understand कि ये order कहाँ से आया है. So if you try to square off from here, so it will incur your normal brokerage plan in that case. Sir, can you explain bull call spread and how to take position on stock, like example? Okay, how to take position on stock. Okay, so all you need to do is just click on FNO. आपको smart tools पे आना है, then you need to click on basket order. यहाँ पे you will have this ready-made strategies available. यहाँ पर आप देखोगे bull call spread आपके पास available है. आपने बोला कि मेरे को एक stock का example चाहिए, तो let's say मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ITC, ठीक है, 28 सितंबर पे एक्सपायरी है. बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करूंगा. 445 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, स्पॉट प्राइस उसका 445 का चल रहा है, फ्यूचर्स इज 446.
445 का बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है एंड 450 का मैंने सेल किया हुआ है. Now this is one way of doing it if you don't want to go through the pain of selecting the strikes. There's another way of doing it. You can go to the strategy builder. Now here you will be able to see, let's say मैं ITC टाइप करता हूँ यहाँ पर ITC. यहाँ पे you will have the option to choose कि आपको कौन सा स्ट्राइक पे बुल कॉल स्प्रेड करना है. वहाँ पे हम लोग ने देखा था 445 को बाई किया था एंड 450 को सेल किया था. तो 445 वाज लाइक 8.95 एंड 6.5 पे आप सेल कर रहे हैं. ठीक है. और some people might want to go with 440 को बाय करना है एंड 445 को सेल करना. तो what you need to do is you need to click on buy here. यहाँ पर एक आपका लैग ऐड हो गया. सिमिलरली अगर मेरे को 445 का उसको सेल करना है तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेल. तो यहाँ पर मेरा एक सेल का लैग भी ऐड हो गया है. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, 440 मैं बाय कर रहा हूँ और 445 को सेल कर रहा हूँ. तो दिस इज नाउ माय बुल कॉल स्प्रेड. सेम चीज हियर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरा कितना क्वांटिटी, सॉरी सेल मेरा 64 क्वांटिटी हो गया. सॉरी यहाँ पे मैंने वन लॉट मैंने किया हुआ है. एंड हियर यू विल बी एबल टू सी ग्रीक्स एज वेल, डेल्टा, गामा, थीटा. एनालाइज पे क्लिक कीजिए. हियर यू विल बी एबल टू सी योर बुल कॉल स्प्रेड का पेयर ग्राफ. तो अगर बुल कॉल स्प्रेड आप लेते हो तो आपको टिल एक्सपायरी इफ यू कीप रनिंग दिस, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3440 होने का चांसेस है एंड द मैक्सिमम लॉस इज लाइक 4560 का आपका मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस है इन दिस केस. आप इसको सेव कर दो. लेट्स से आपका अगेन ITC बुल प्रोसीड. मेरा यहाँ पे ITC बुल मेरा हो गया है. मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ. It will come to this particular page and here all you need to do is just simply place order by just looking at the margin. ठीक है. So that's how you can create it. And the other way that I showed you was going through basket order. If you just want, if you already know what you are doing, bull call spread पे click कीजिए. ये तो निफ्टी का आ गया. Sorry, I was just looking at ITC. इसी पे क्लिक करूंगा and then 440 की जगह पे if you want to buy 440 and then 445 का अगर आपको सेल करना है तो सेम थिंग यू विल बी एबल टू सी इट. 4160 हो गया है 3800 अभी बिकॉज द प्राइस इज चेंज स्लाइटली. आप यहाँ पर डन कीजिए. Existing positions and you'll be able to place order straight away from here. So these are the two ways you can do it and I would recommend you to please use these kind of tools available. Here you'll be able to see margin as well. अगर आपके पास पोजीशन अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हो. इधर आपको देखना है कि नहीं भाई मुझे एक सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगता है. you'll be able to see कि 134 लगता है. अगर मैं सिंपल नेकेड बाय करता हूँ तो कितना मार्जिन लगने वाला है, 18,000 का मार्जिन लगने वाला है. मैं इधर कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं चेंज कर देता हूँ एंड देन आई पुट इट, then what will happen. So all these things you will be able to use it, utilize it और आप कर सकते हो. अगर आपको कोई और एडिशनल लाइक भी ऐड करना है तो you will be able to do that. आपको जस्ट यहाँ पर जाके ITC टाइप करना है एंड देन आपने 430 का लेट्स से मेरे को कॉल एट द सेम टाइम मेरे को बाय करना है एग्जांपल. तो you just have to click on save and then it will get added to here and then you will be able to do this. तो आप ये दो बाय करो, एक सेल करो. आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन यू द स्ट्रेटजी दैट यू आर डिजाइनिंग. हाउ टू रिड्यूस लॉस इन बुल कॉल स्प्रेड. सो अभी हमारे थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स आएंगे एंड दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू कि कैसे करना है. बट द best way to reduce loss in bull call spread is keep shifting in the market. Because क्या होता है कि जब आप बुल कॉल स्प्रेड लेते हो तो इट विल, लेट मी जस्ट शो इट यू हियर. मैं बुल कॉल स्प्रेड लेता हूँ तो ये जो आपका जो सेंटर पॉइंट है, यू ऑलवेज नीड टू मेंटेन दिस सेंटर पॉइंट हियर. तो ये इसमें क्या होगा कि अभी ये 19600 19650 चल रहा है. मार्केट आपके प्राइस से एकदम आगे की तरफ चला गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन अगर आपके प्राइस से एकदम नीचे की तरफ चला गया तो यू विल स्टार्ट इनकरिंग लॉस. अब क्या होगा, आपको बिकॉज लॉस हो रहा है तो आपका जो सेल वाला जो साइड है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, बाय वाले साइड में आपको लॉस हो रहा होगा. तो आपको क्या करना है कि
जो सेल वाला साइड है उसको आपको शिफ्ट करना चाहिए. This is just one recommendation, not necessarily it is going to be in exactly the same way. There are several different ways of adjusting it. You need to adjust your spreads according to the market condition, तो जिससे कि ये जो आपका जो सेंट्रल लाइन है, जो सेंट्रल लाइन आता है वो आपका सेंटर में रहे विद रिस्पेक्ट टू मार्केट. नाउ यू विल से कि मार्केट तो डायनामिक में हमेशा कैसे कर पाऊंगा, बट यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू दिस एवरी सिंगल टाइम. आपको ध्यान रखना है, आपको डिसाइड करना है कि अगर मेरा इतना 10% या 20% ऑफ जो मेरा मैक्सिमम लॉस है अगर उतना अचीव हो जाता है, उतना आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा फिर शिफ्टिंग करना शुरू कर दूंगा. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डिसाइड इट. तो उससे आपको जब शिफ्ट करोगे तो क्या होता है उससे कि जो आपका यू नो द लॉस मेकिंग साइड है, मार्केट आपको जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, मार्केट इज गोइंग टू बी चॉपी. वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आएगा, तो जो आपका लॉस मेकिंग साइड है इट विल रिकवर. ठीक है. एंड द प्रॉफिट साइड तो आपने प्रॉफिट बुक कर ही रहे, तो दैट्स हाउ यू विल हैव टू कीप शिफ्टिंग इट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन. विल यू कवर जीटीटी? सर मैंने ऑलरेडी जीटीटी कवर कर लिया है. राइट इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय सेशन मैंने जीटीटी ऑलरेडी कवर कर लिया था. परहैप्स यू माइट हैव नॉट गॉन थ्रू इट, बट लेट मी अगेन. Rajbhai and everybody is about to come, and just before they come, You can continue, Sumit, for next 5-10 with minutes. the No worries, GPT. no worries. Yeah, sure. So just I can see that people might have missed my. तो GTT के लिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ. तो all you need to do is just go on FNO place order page. आपका options है यहाँ पर. Let's say आप निफ्टी 19600 का कॉल आपको बाय करना है. 64 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है एंड आपने यहाँ पे 62.85 डाल के रखा है, या फिर यू वांटेड टू स्टार्ट एट मार्केट. ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स से 50 रुपीज़ डाल देता हूँ जस्ट टू शो यू. अब यहाँ पे इट इज रिटन एज गुड टिल ट्रिगर, तो आपको यहाँ पर करना होगा. बिकॉज आई एम बाइंग इट इज शोइंग मी सेल. अगर मैं सेल होता तो यहाँ पर बाय होता था. ठीक है, तो यहाँ पे सेल है. वाई सेल? बिकॉज whenever you try to square off whether it is in the loss or whether it is in profit, you try to sell it, and that's why it is called a sell. तो यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप आके अब मैं 50 रुपये में बाय करना चाहता हूँ, तो मेरा लेट्स से 40 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस होगा एंड 65 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट होगा. यानी कि मैं 10 रुपये लॉस लेने के लिए रेडी हूँ एंड 65 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा. यहाँ पर आप आइए, मार्जिन देख लीजिए, आपको जो भी है इंक्लूड पोजीशंस आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो एंड ऑल. प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक कीजिए एंड देन द ऑर्डर विल गो थ्रू. ठीक है, यहाँ से और जीटीटी बुक पे क्लिक कीजिए या यहाँ पे जीटीटी बुक पे क्लिक कीजिए एंड यू विल बी एबल टू सी कि मैंने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया हुआ है. मेरा 40 का टारगेट है, सॉरी 40 का स्टॉप लॉस है, 65 का मेरा टारगेट है. ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, ये मेरा टारगेट दिखा रहा है. यहाँ पे माउस ओवर पे आपको दिखाई देगा. आपको मॉडिफाई करना है, यू विल बी एबल टू मॉडिफाई इट. यू नो स्टॉप लॉस मेरा लेट्स से 35 कर देता हूँ और मेरा टारगेट आई विल चेंज इट टू लेट्स से 75. मॉडिफाई प्रोसीड. ठीक है, ओपन पोजीशन में तो आई हैव सम अदर पोजीशंस अवेलेबल. ऑर्डर बुक में यू विल बी एबल टू सी कि आपने जो पोजीशन डाली थी 50 रुपये पे लिमिट प्राइस, इट इज स्टिल देयर इन द सिस्टम. जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट, and then the other two orders will become active, and दोनों में से कोई भी साइड अगर हिट होता है the other will get cancelled, right? तो आपको यहाँ पर सिर्फ this is how you have to place the orders in this. Now there's another way. place order पे आप जाओगे, यहाँ पर अगर आप GTT इस पे क्लिक करोगे तो there is a way where you have, if you want to just go single, अगर आप सिर्फ एक naked buy कर रहे हो and then you want to you know put a trigger price for that particular one, you will be able to do this buy या sell कर रहे हो. अगर आपको 2 लेग्स का करना है जहाँ पे आपको टारगेट एंड प्रॉफिट दोनों चीज डालना, तो यू विल बी एबल टू डू दिस एज वेल. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यस मैम, आई एम कन्वर्सिंग. द सेशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो दैट्स व्हाई, सो प्लीज डोंट माइंड. Please focus your camera. Sir, I'm actually sharing my screen, so I cannot have it as a camera. So I believe
you need to zoom in a little bit more. GT is not even option plus. So at the moment, so GTT is available only for options and futures. It's not available for option plus. It's not available for so future plus, and it is not available for option plus at the moment. So it is only available for options and futures for now. Sir, can we apply GTT in stocks in Demat account already purchased? Sir, at the moment it is not available for stocks. It is only available for FNO. Stocks ke liye it will be made available soon. We're working on that, so it will be made available soon. So, Gaurav, if Raj Yes, and Sumit, I'm there. Yeah, I'll just see whether Dinesh Raj bhai and Dinesh sir are there. yeah, I'll just check in the meanwhile. The market has shot up. There's a the definite market short is covering. bullish. Yes, yes. Yes, Market is going really very up. I yes, can clearly see while I was showing the guys the yes. The price flash of trade. ATM option. 19600 was it is short. तो Yes, बहुत मस्त ऊपर से चला गया. yes. So, Dinesh sir, Raj bhai, are you there? Yeah, I'm here, Gaurav. I'm Yeah. here. गौरव आ तो गए हैं हम बट तो नहीं, सही वो मैं So पूछ रहा Gaurav, था. I'm just stopping Yeah, my Sumit. screen sharing. Yeah. हो सकता है एक और दिन है मतलब व्यू मैच नहीं किया बट नहीं, गौरव एक चीज that's समझिए okay. 10 रुपए क्या 5 रुपए इज नॉट एन इशू. मतलब किसी को एटलीस्ट लॉस इतना बड़ा नहीं हुआ ना. अभी दैट्स मोर इशू इम्पोर्टेंट. क्या है कि आप देखो तो 650 का कॉल योर 650 कॉल इज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज राइट या योर स्पॉट इज 655 या एंड द पुट ऑप्शन इज जस्ट 8 रुपीज यस. दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन might be because of change of your bank nifty options नो राज भाई, आई टेल यू व्हाट हैपेंड. सुबह ना, when we were सुबह as in around 12 o'clock, that fair price of today's expiry was trading below the spot price. Now it has gone in premium. Fair price is trading at 672. So that is why call price has gone up to 30. fair Hello? price is from your option prices Yeah, right yeah, yeah. I'm checking on an yes application. yeah again I'm saying because this fair price is has been derived from the option prices so your basic evaluation has to option prices not the fair value on the basis of option prices you arrived at your fair value Yeah, so when you that's what I'm saying ki your put options see the what is the IB of 650 put it's not even 3 and your IB of 650 call is 6 more than 6 right. so almost double the IBs your call options are enjoying right now. Exactly. So one thing I can say, okay, it's because of the covering 650 call was heavily written and that's why you are witnessing this covering and at the same time there's significant writing among puts. So that's why your put writing is put IVs are coming down. But that doesn't explain such a wide difference in your option prices. Either it is like okay, Nifty is going to settle around 19,700 and nobody is going to make money. All the writers who have written the positions yesterday or day before yesterday, they are going to. Raj bhai, I'll stop you here. The reason is Nifty has reached 19,660 plus, and Dinesh sir ने बोला था कि 15 minute close above 650 is a clear case for short covering. Dinesh sir, Yeah, well, 15 minutes will happen at 2:15. but Dinesh sir, Uh, previous candle closed at yeah, but still, why? yeah, Because if you go to see, there is a gap down which had occurred on 2nd of August. वो gap down area में घुस गया. So that becomes your immediate what you call for today's expiry target 680 to 704. उस लेवल को वो अटेम्प्ट करेगा पर वो चाहिए 15 मिनट उसके ऊपर एंड द हिंट एक्चुअली द फुल मूव इज बीइंग प्रोपेल्ड बाय बैंक निफ्टी बिकॉज सारा गांव निफ्टी में घुस गया और चुपचाप साइड से बैंक निफ्टी अपना काम कर रहा है साइड से एकदम पूरा या Bank Nifty and LNT, sir. LNT is up by 4%. LNT is the major mover. We discussed it.
I didn't consider it as an index mover, but L&T has a good thing in index. Hello. Okay, let's go. Sir, any view on Amol sir, RVNL? Actually, we had a gladiator pick RVNL and we booked profit yesterday only. So there is no view right now. Uh, any view on Rajbhai, Dinesh sir, have you all given any trade? Sorry, I was on a call, so the audio was on mute. Rajbhai, कोई I trade दिया आपने fresh? didn't get नहीं you, यार नहीं. Gaurav. Regarding? नहीं, I'm saying कि any fresh trade was given. मतलब I was on a call, so my audio No, was no, on mute. nothing. Nothing. Okay, okay. तो राजभाई 650 के ऊपर है, क्लोज भी मिलने के लिए तैयार है 7 मिनट बाद, मतलब टाइम है अभी. तो एनी चेंज इन व्यू? और आप, आई नो आपने बोला कि 19,700 भी जाएगा तो मैं बाई कॉल नहीं दे पाऊंगा. तो बैंक निफ्टी पे या कोई और चीज पे अगर आपका कॉल है तो मैं वो ले लेता हूँ, बिकॉज आई नो निफ्टी में यू वर नॉट ऑफ द व्यू कि इट विल गो अप, सो यू विल बी अवॉइडिंग इट, आई एम प्रीटी श्योर. हेलो. हाँ करो मतलब हाँ. अभी अगर मैं मिड कैप देखूँ ना तो मिड कैप निफ्टी आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम दैट इज इन नेगेटिव. या. Your even a small cap index is not that performing that well, somewhere near the lows only. L&T is the reason why. Yes, yes, and we discussed it around somewhere close to 2800. यस. Yes, and it's a big move in L&T, sir. I think today's maximum gainer, maximum contributor on Nifty is L&T. The one which has contributed maximum from the Nifty 50 stocks, that is L&T. L&T has a total contribution of 30 points, followed by Coal India and HDFC Bank. Yeah. That is it. So we'll take some questions. Um, welcome. Okay, view on Sun Pharma 110 CE. Sir, I think we had given it a couple of days back and we booked yesterday. But as of now, the view remains positive in the stock, particularly for this strike 1160. Let me check. So it's around 7. Okay. You can keep a stop loss around 5.2 and hold it. Okay. दिस इज अ मिस. निफ्टी मूव इज अ मिस, क्लियरली मिस. बट क्या है कि अभी अगर मैं 650 का कॉल भी देखूंगा तो दैट इज अराउंड 35. सो माय ब्रेक इवन वुड कम अराउंड समवेयर क्लोज टू 685. टू मेक मनी we have to settle around above 700. So, I'm not Rajbhai, sure. any panic covering by 650 call writers or 600, 700 call writers? 650 तो पैनिक 100% है. 100% पैनिक है सर. मतलब हमने देखा था तब इसमें 5 करोड़ शेयर थे या 4.5 करोड़ शेयर थे. राइट नाउ इट्स जस्ट 2.1 करोड़ शेयर्स. एंड एग्रेसिव पुट राइटिंग एट 600. इवन 650 पुट में भी आपके ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयर्स हो गए. सो दैट्स व्हाट नाउ वी हैव नेवर सीन सच अ क्वांटम. इट मे टेक सम टाइम फॉर अस इवन टू रियलाइज कि हाँ भाई इतना भी ओआई हो सकता है. 4 करोड़ शेयर निफ्टी के एक स्ट्राइक में मतलब इज ह्यूज.
आज का मार्केट को अगर दो एक लाइन में डिस्क्राइब करना होगा कि आंखें झपकी दुर्घटना घटी फॉर अ कॉल राइटर, तो स्पेशली फॉर अ कॉल राइटर। मैं बस एक ही चीज कैसे मार कहूंगा, रहे हैं ये लोग आज, देखो। मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर आप लोग ने मेरी बात सुनी नहीं आज, तो ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं गौरव, सबके दिन आते हैं। ये भी है राज भाई, ये ओके। नेक्स्ट इज एनी अपसाइड ऑन जुबिलेंट फूड। ओके, दे आस्किंग जुबिलेंट फूड। जुबलेंट फूड ने कल बहुत बहुत टाइम के बाद एक अच्छी कवरिंग मूव दिया था, आई वुड से। ठीक है, तो इस मतलब सॉरी, डे बिफोर, नॉट यस्टरडे एग्जैक्टली, एंड स्टॉक हैज मूव्ड अप ऑन द बैक ऑफ प्राइमरली कवरिंग। सो अब तो इस मेरे लिए 500 लेवल तो बहुत दूर हो जाता है, इवन इफ इट इज अबव 515, इट रिमेन्स अ बाय। सो अबव विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 515 वन कैन रिमेन पॉजिटिव हियर। ओके ओके, एनीथिंग एल्स राज भाई? दिनेश सर, आई जस्ट वांट you to focus on one part, one sector again, the financial, sorry, the financial sector, the fin nifty side. Now slowly fin nifty and PSU banks have gaining momentum. Also energy and Tata Power, थोड़ा टाइम पहले बात किया था, Tata Power है 265. Raj bhai, please look at Tata Power. Tata Power has crossed 265 and 260. Dinesh sir, remember 260 was the resistance we were speaking about, and it has या उससे easily, ऊपर निकल गया। एकदम easily नाउ crossed टाटा किया. पावर इज हेडिंग टुवर्ड्स प्रोबेबली टुवर्ड्स 270 एंड अ लॉट पॉसिबल। बट फर्स्ट फिबोनाची रेजिस्टेंस जो होता है 1:1x टेक्निकली, वो 268 पर है अब। Yeah, तो accordingly it should move now step by step, but overall look at nifty now, and निफ्टी का छुपा रुस्तम निकला बैंक निफ्टी, वो चुपचाप साइड में पूरा गांव, you know, this is what happens when the whole world looks at one instrument and ignores the catalyst of a nifty move, which is bank nifty. टाइम एंड अगेन वी हैव स्पोकन कि बैंक निफ्टी के बिना ट्रेंडिंग मूव नहीं आ सकता है, यू नीड बैंक निफ्टी एज अ सपोर्ट। तो आज वही हुआ है कि सबका नजर इधर आया, वहां लो हुआ है और निकल गए वो बैंक निफ्टी वाले आगे निकल। exactly, exactly. And as we okay, Nifty is not stopping 675. I think it is moving towards 19700 now. Given the panic that it has created in 19600 के call writers में भी sir, and I think 19650 में तो वो हो ही गए, तहस नहस कर दिया उन लोगों ने. पूरा तहस में से। Absolutely. Okay, so moving on, sir, can you please provide your insights on TV18 broadcast bot? TV18 is in, is it in, I'm sorry, sir, we won't be taking stocks which are not in FNO. I think TV18 is not in FNO. BPCL futures, okay. So, Dinesh, okay. हाँ, विच वन? Uh, BPCL. ओके, जस्ट वन सेकंड। राज भाई, आप ले लोगे तब तक? No, I'll take BPCL, no issue. Yeah, yeah. I thought you went on a call. That's why. So BPCL immediate resistance is around 365. Big one, I would say, is 365. At a very small resistance of 357, 358, क्योंकि वहां से होता था। Just let me share my screen. You will get a better idea. इसको मैं डेली में जाता हूँ। You see this zone में थोड़ा सा ये हुआ था, consolidation was quite a bit यहाँ पूरा। So that zone is trying to stop it, try to stop it here also once. Let it sustain above that 355, 57, then you have a neat move towards 370 and a lot more possible there in this case पूरा। देखो यहाँ पर भी कितनी बार, you know, one minute. Just let me remove the Ichimoku. You get an idea. Right. I'll just draw a line for you. You, Okay. you Okay. take this line out on the upside and इसको कोई रोकेगा नहीं फिर, एटलीस्ट यहाँ तक। Just to keep it simple,
एक वॉल के ऊपर दूसरा वॉल है, उस टाइप से इसमें पूरा, लाइक दैट. सो टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. Rajbhai has taken. Rajbhai has got some work, sir. So he'll join us in 10-15 minutes. Naresh, sir, what is AOL? I don't know what is AOL. Can you just spell it out for me so I can help you out with that? Uh, Indian Oil. Dinesh, sir, chart view on Indian Oil. IOC. What is? Yeah, I think no. AOL is different. I think I'm taking the next question for now. Okay, okay, sir. He has taken 19,500 calls. Sir, have you sold this call? Nifty monthly call of 19,500 and 315. What is the stop loss? Okay. Dinesh sir, that is the question. Which one? Which one? 19,500 Yeah, monthly. monthly. Yeah. Okay. So okay, this is weekly. Sorry. Let me just go to monthly. Here you go. ये daily है. It's because ये monthly है, तो we need to see a larger time frame perspective. First major support at 250. A slightly deeper support, I would say, is 215. But 250 is right now a huge support. There is an immediate resistance coming up in it around 355. But that's quite far now. 355. 355 के ऊपर next major 475. Okay. That's how it's placed right now. So his SL would be, sir, what would be his SL? I would say, if it 250 अगर नहीं, any dip till 250 अगर समझिए वहां से वापस ऊपर नहीं जाता है, तो थोड़ा टाइम पास करके नीचे आ सकता है to 215. Because as time progresses, see, this is now an in the money call, right? So a lot of nifty staggering moves में इसका वो भी तो impact आ जाएगा ना. Because right Yeah. now 676, so 140 पॉइंट्स का आईवी इसमें है टाइम वैल्यू अभी भी इसका, तो वो तो धीरे धीरे घटेगा ना इन द मनी वाला. बट या, यू कैन कीप 350 475 on the upside as resistance, 250 and 215 on the downside as crucial levels for this. Okay. 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 I'll take the next one. Yes, Shreyas, we'll make a video on GTT for sure. Okay. HDFC Bank. I think the Rajbhai has anyway spoken about HDFC Bank. HDFC Bank, he's bullish. He is expecting covering here above 1600, and we already have a call open there. So I think today's move is also coming from banks. I think HDFC is one of the leaders for this move. So that is already covered. Any call at this time, sir? Right now there is no call because there's only one call, that is Adani Enterprises 2500 call option to be bought above 140, and the target for that is 170 for short term players and 250 to 280 for long term players. Suzlon we won't be covering, sir. Indian Oil, sir. View on Indian Oil Corporation. Can we take a chart check? Yeah. Okay, sir. Sir, before Indian Oil, can you just take Bajaj Auto? Someone has bought 4800 call option at 60 rupees. So could you just help, because I was about to take this, but 4800 call. Yeah, at 60 rupees. Bajaj Auto. 15 minutes. Okay. See, so far the call, what I can tell you, in the spot chart of Bajaj, 1 minute. Bajaj has got immediate resistance at 4700. Immediate. Right now it's now 4675. वो एक Okay. जैसे ही वो उसको निकालेगा ना अपसाइड, तो it should start moving, and if that 4700 is taken out, then this will become this particular call. इसका अभी दाम है 50, आईवी लेके डेल्टा लेके ये 60 के ऊपर आ जाएगा, तब उसके ऊपर ही मोमेंटम है, बहुत शार्प मोमेंटम है इसमें उसके ऊपर. Okay. Fair enough. Then IOC, sir, now. IOC. Indian Oil Corporation. Yeah, one second.
इसमें अगर देखो ना तो एक वेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है छोटा टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम, यहाँ पर, या यू कैन सी इट हियर. It's a wedge kind of a structure. You want to see this structure broken on the upside. Yeah. Okay. तब तक थोड़ा सा टच मी नॉट है, थोड़ा सा, बिकॉज ये यहां से मूव आया, देखो वन, यहां से मूव, like this. So you want to see it broken on the upside, then good. Otherwise, it might again do a dip down to probably this zone. So I would like to see that trend line broken. So whoever is asking this query and you have ICICI direct charts with you, just draw the line on that chart and wait for a hourly candle to close above this trend line for more strength in it. That way. Absolutely. Okay. 19 on C now trading at 8. Can we sell? No, no, no. For Fazal Khan sir, 19,700 call option selling at this rate would also be very risky, because this is a short covering rally. There is a panic among call writers. We don't know where it will end. So though 19,700 will be tricky, but अगर वो भी क्रॉस होता है, because we have seen days where 200 points rally has been seen in the market, and I won't be surprised seeing another, like, it's just 66 points up and 40 point और यहाँ से add करना won't be a surprise for Nifty. So in this short covering scenario, selling call is a bit For risky. 8 rupees, why you want to do Yeah, something like you will that? you will risk out a big No, number. unlimited risk हो जाएगा आपका. Exactly, because even if you're selling it, you'll sell it for around 1 lakh rupee margin, and you are just making 400 अभी rupees on that. 6.75 है, तो for 6 rupees if you are going to sell something, so your max risk should be 9, max risk. और इसमें 12 rupees के पहले तो कोई मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं है सामने, Yeah, तो that's just not worth it. Just not worth it. absolutely okay. I'll take the next question. Next question is Dinesh sir. Next question is, can you see the chart check of HCL Tech 1250 call option? Yeah. So before we go into the HCL Tech option का चार्ट, इसका जो स्पॉट है, the IT stocks last few days did brilliantly well. Persistent, Wipro, Coforge, they were all doing excellently well. Even this one, HCL Tech. If we go just to the daily, the spot underlying, okay, spot underlying, it has an inverse head and shoulder in a higher time frame. Okay, it's not a short time frame thing. In the higher time frame, yeah, it's an inverse head and shoulder which had broken out, which probably has its resistance near 1275 1300, which is another 25 to 50 points away, but that's higher time frame. It could do a staggering here, there, and then push its way up, because काफी लंबा मूव है, देखो आप, नॉन स्टॉप मूव है. So 14 bucks or this one. So yeah, around, I would say for 15 rupees should be a good major support for it. I'll just be back in a minute, Gaurav. Just Yeah, one yeah. minute. Okay, viewers, we'll wait for both our experts to join. Raj bhai is busy with some office work, so he'll be back in 10 minutes. So we'll see if we get any trade calls for last 1 hour. So even we are here. The live stream is on. Just give us 10 minutes. We'll be back.
You're back. Nifty is also back from 687. But there is another interesting development happening. Let me Yeah. just share my screen. 1 minute. You know what can push Nifty up if it has to go further up is the Bank Nifty. And if we look at the Bank Nifty and you just simply draw a trend line out here for further trigger. So that trigger is at 44,666 on a 15-minute basis. See, first attempt, second attempt, trying to do a third attempt now. So if today this pushes its way above this trend line, that will propel Nifty further up. So this is what is causing the stop, the covering in the 19,700, 650 calls. This is what is actually doing it today, right now. And given the time that we have, sir, right now, if you see 19,700 call writers are at panic. Yeah. They are in super panic right now. Yeah. यही होता है जब आप ₹5 ₹6 के लिए घुसते हो ना और practical, you're not, that's why the problem is, people are not calculating risk. They're getting lured so much into reward in this market. और अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो फिर भी समझ नहीं आता है. मार्केट स्विंगिंग मार्केट है फिलहाल. Absolutely. Yeah. And you can see now 15-minute candle उसके ऊपर बंद कर दिया. और अब that will further push the Nifty, guys, out of you just corner. see Because 10 heavyweights, 6 heavyweights are pulling this now. Yeah. All the banking together. Absolutely. And I think somebody had asked about selling it at 8 rupees. 19,700 call right now is at 13. It went to 14, now it's at 13 rupees. So see, it is almost doubled. Yeah. So यही होता है in such moves. An absolute catastrophe to do such things, Absolutely. Ekdam. Okay, sir, we'll take a few more questions. Titan. Someone has got Titan 3,100 call option at 60 and now at 100. So should he hold or? See, I have a saying that once you get a winner in your hand, you should try to run as much as possible, because रोज आपको बाउंड्री सिक्सर मारने नहीं मिलते हैं. कई बार आप जीरो में आउट हो जाते हो, कई बार आपका बैड लक चलता है. sometimes you don't, so you are getting a good move. I would say you can hold on to it with a prior swing. ये जो prior swing level है ना 93, 90, इसका एक ट्रेल लगा के जितना ऊपर जाता है उतना अच्छा ना आपके लिए इसमें. So you're risking $6 for much more higher if it works out for you. और इसमें भी देखो, you can see an inverse head and shoulder in the pattern. Yeah. Right. So this was at resistance 110. इसके ऊपर अगर निकल जाएगा ना ये, तो आपको और भी possible होगा. So you're risking just $6-7 for more in that case. Yeah. Meanwhile, as we speak, sir, Nifty spot is trying to kiss 19,700 now. Yeah, it will do that only ना. वो सबको वो बैंक निफ्टी वालों ने बहुत जबरदस्त ट्रैप किया आज. बाकी Perfect. I'll take few more questions. Can we buy 19,700 put, sir? See, again, this is a short covering rally. And why to play against the rally? It is of no use. It is just like gambling. So better to. नहीं ऐसा काम नहीं करिए जिसमें. Yeah. 45,000 call option positional CMP. Okay, someone's asking about 45,000 call option at 130. Weekly. Yeah. This is an immediate wall. 150, 160. इसके ऊपर there is nothing stopping it till 280. This is that immediate wall, but 150, 160. Yeah, see, it's trying to push its way. ये 180 लेवल इतना इजी नहीं है. 180, 90 इसके ऊपर पूरा फुल फोर्स में आ जाता है. Like that. Okay.
Dinesh, I'll just come back. I'll just ask Rajbhai whether he'll be able to join Yeah, back go or not. ahead. If not, then we'll end the stream because right now there's no trade. Rajbhai is the one who gives us trades. I'll just ask him. So Dinesh sir, Rajbhai won't be able to join us because he has got some urgent work, urgent office work. So I think we'll end the Yeah, stream here. Viewers, we'll see yeah. you next. We'll see you guys next Thursday as usual. We will be doing a short video on Wednesday for Bank Nifty expiry. There will be a short video that will be released from Rajbhai. So it won't be a live session for 3 hours, but we'll do a short session so that we will be considering for Bank Nifty expiry coming Wednesday. And this Thursday we did not have our view matched and we did not have a trade anyway. So see you guys next Thursday. Okay, thank you so much for joining us for this stream as usual. Thank you, Dinesh sir. Rajbhai is not Thank here you, still. bro. Thank you, Thank you. Rajbhai, for being here. And be straight, trade safely, everyone. Save your capital and don't fight the trend ever. Bye bye. Yeah. Okay. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.